we have taken so chlorine sensor reading at the source and at the far end, last household. Then we have done the math and arrived at a number which is not very strong at the first household and not very weak or the mild at the last household. So if we have enough budget, we can go for both the sensor, but still the source dosing will be done at one place. So based on one either source or at the last house, we cannot decide what is the the amount of dosing, chlorine dosing has to be done. So we have to optimize based on which is good for all the households. True hit and trial, like, yes. Another question. Yes. So based on the yes. So no, based on the source, I mean where the dosing is done. Yeah, that is correct. So each. No, so that is what we need to, based on the stuff, first house dosing, I mean, the concentration and the last house concentration, we have to arrive at a number which is then, uh, okay, if there are, हाँ, और एक question था PLC controller का what is the cost generally range? no, here we are not using PLC only for pump controller. We are using LNT contactor and connecting the float switches. So it is all completely works as an independent system with wireless communication. So what is the cost? Challenge matlab security is the only challenge, and even the household should give the permission. Generally, because yes, sir. Sir, in addition to your point, sir, what will be the source of energy at the distribution level at the farthest end? We go with solar based power supply. Okay. Thank you. So I have seen in one of your slides that inaccurate data is coming. Could you little bit elaborate what are the reasons behind inaccurate data? Inaccurate, yeah. So for example, if it's flow, we have seen if the flow meter is not operating properly, if there is a problem, then we will be able to see. For example, in one case, we have seen one day the water consumption reached to a level of 2000. That cannot be possible, right? The 55 LPCD general trend is there, say 40, 55, 60. Suddenly it has spiked. So that's inaccuracy. So immediately we understood that there is some problem with the meter or some other problem. Then we have to go back and check all the steps we just Girish said. So that's one example of inaccuracy of data. Do we need a frequent calibration of these sensors? Yes. Okay. And who will do it? So during your contract with the master system integrator, for 3 years they will do it. After that, okay. That is one of your service condition. Thank you. हाँ पीछे My question is that who will bear operation and maintenance cost of this IoT system, whether it is on part of panchayat or department or agency? So for 3 years, when you are hiring the agency, the O&M has to be borne by the agency since you are paying the agency. It's done. But after that, the panchayat ideal state is that panchayat will bear it. Since Okay. you are collecting service charge, that's where we want to reach for the service delivery which we are providing. Thank you. हाँ. सर फ्रॉम छत्तीसगढ़ ये जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहे हैं सर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंसर अबाउट क्लोरीन सेंसर बट वी हैव नॉट सजेस्टेड in any of that distribution phase. So it should be included, I think. Necessarily it should be included because it's a very important part.
So this is not something hard and fast rule. No, it's not like a hard and fast, but when we are suggesting, so it should be suggested. Fine, I think. fine. Thank you. He's saying that chlorine sensor should be there in the intermediate also. In distribution phase, sir. Yes, sir. Yes. Yes, yes, yes. ज़्यादा efficient काम करेगा. जी, जी, जी. Okay. Right, sir. Right, sir. Thank you. Thank you. I can hear you still. Yeah. Very serious issue with respect to GSM, the connectivity. Now the question is, if we move from GSM to maybe LoRaWAN or any other solution, that is even costlier. Yes. Now, if we have to, like what Director Sir was just pointing out, to look at a solution which is more cost effective, and GSM solution is the most cost effective. And as we move towards rural areas, the GSM connectivity is always a challenge. Now from 4G, 3G, 2G. Now 2G is the most, again, cost-effective solution. Now we are facing, even outages in terms of 2G network not being available. Now, in your experience, how do we solve for this kind of a problem? This is a very practical problem. The whole system shuts down if we don't have a network. But LoRa, you have to use only for the first mile, right? From the sensors till the gateway. From the gateway, we have to depend on GSM. So 30,000. ah, Sir, almost 10,000 plus में. हाँ. हाँ जी. बिल्कुल, बिल्कुल. Right. Yes, yes. नेटवर्क पे डेटा चला जाए, वो एनालिसिस और उसके लिए यूज होगा. लोकल डेटा है, आपका जहाँ आरटीयू आ गया और आरटीयू पे डिस्प्ले जो लोग देख सके, वो इमीडिएटली वहीं पे होना चाहिए. दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द जीएसएम कनेक्टिविटी. आज जीएसएम कनेक्टिविटी हफ्ते में आई, 10 दिन में आई, तो डेटा चला जाए मेरा किसी तरह से, ताकि मैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस करनी है, मैं बैठ करके ऑफिस में कर सकूं. डिस्ट्रिक्ट में बैठे बैठे आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब देख सके भाई कितनी स्कीमें चली, किसमें दिक्कत है, क्या है. तो देखिए जो इसमें सेंसर से जो इम्पावरमेंट है लोगों का इमीडिएटली हो, तो वो एक लोकल सोल्यूशन की लोकल डिस्प्ले होता है. लोकल उनको किसी तरह से दिख जाए, नेटवर्क पे डेटा जाया जाए, तो थोड़ा मिटिगेशन आपका हो जाए. फिर दूसरा है कि जब हम डिजाइन कर रहे हैं, अगर हमें पता चल गया क्योंकि हमने डिप्लॉय कर दिया है, अब आप सोच सकते हैं कि इन एरियाज में प्रॉब्लम है, तो लोरा में इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं. तो वो आप नहीं करेंगे पीएचई डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ बैठ करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि लोरा से आप कितनी सारी सर्विसेज भी और ऐड कर बिल्कुल कर सकते हैं. लार्जर बेनिफिट देखेंगे तब वो सेल हो. तो आप कहीं साहब हमने 2/3 में सॉल्व कर लिया है, 1/3 में नहीं हो रहा है, क्या करें? तो यू गो विद दैट. इसमें सर मेरा एक सजेशन था, एंड मे बी एट द मिनिस्ट्री पे आप थोड़ा सा इसको हेलो. Before the pumping, you need to have a water level indicator, because if the pump turns dry, it may go out of water, and that will be a huge, big problem. Secondly, at the treatment works also, rate of filtration is very, very important. So how and when to backwash the filter, that is another thing. And then maybe pressure in the pipeline is also very important. The distribution and so 2-3 suggestions one should do. And of course the power condition, because pumps energy meter. energy meter, yeah.
when there is a high voltage or low voltage, because ultimately it is affecting your machinery. And once the machinery, then it is a high cost sort of thing, and requires a lot of time to maintenance also. Thank No, you. sir, point well taken. As I said, that this is not hard and fast, this is just an indicative, but definitely it will depend on the budget you are having. It will depend finally on that. The essential things, Essential. very, very essential thing. Once you want to run the system, then you need to have this system. Sure. Hello. Sir, as you say, just the technical agency who will provide the solution Right. for 3 years. After that, after 3 years, who will provide the technical guidance to the Gram Panchayat level? Now, the idea is the Gram Panchayat needs to do it. So that's on their own after 3 years. The knowledge gets transferred from the during the operation and maintenance period from the master system integrator to the Gram Panchayat. Like, it's not really a very tough job. So on a day-to-day basis, what needs to be done, there has to be some 2 people at least dedicated for maintaining that post 3 years. That responsibility goes to the GP only. Right. One more question is, who will monitor the regular basis for data monitoring system, and where it will be set up? It can be set up at a state level. So the data can come to the state cloud. If the state wants to procure a cloud and an application, it can be set up at a state PHED level. And finally, there will be a central cloud, which I spoke about, which is getting developed. So all data from all villages will come to the central Then cloud where how you will can be. then how can Gram Panchayat will ensure that What there is a Gram Panchayat will problem or have a not? local video display at their level. So where the basic data will come, flow, quality, all those data. So there will be a display. So that will be also be a part of your RFP process. You can have a display unit at a panchayat level. Okay. Thank you, sir. At a GP level. Yes, that's what I'm saying. Okay, so from the fundamentals now, I think we will move on to a bit of analytics. What if we have sufficient amount of data, how we can use that data for insight generation and decision making. So over to Shautik to invite the next panel member. Thank you so much. Thanks a lot, Arghya and Girish and all the participants. So thank you, Argo, for taking us through all the various sensors and hardware that are required for an IoT-based solution. So the next question comes, once the data comes to us, once the data is ingested into a central digital wall, then how to use that data? So how to make full use of the data? So that will be our next step. And for that, I'll invite our guest, Miss Dola Gupta, scientist from Calcutta University, to take us through the next session. Over to you, ma'am. Thank you, Shautik. Good morning to all of you. To begin with, I would thank Sri Vikas Sil ji, Sri Pradeep Singh ji, and all the members of the workshop organizing committee to invite us to share our experience in the experimental and analytics that we are doing in the University of Calcutta. So my topic would be how predictive analytics with help of IoT can help improve service delivery and reduce cost in future. To begin with, I would like to introduce our research group leading with Professor Amlan Chakravarti as group head, Professor Anjan Kumar Dasgupta, who is an eminent scientist in biochemistry, who is in charge of the water quality management in our lab, Dr. Shoptarishi Goswami,
who is the data analyst and digital transformation lead. Dr. Jyoti Gautam, she's a member of IWA, International Water Association, and a professor in JSSAT Noida. Myself, I am Dola Gupta, DST women scientist working in the field of water distribution system quality as well as quantity management. Mr. Pratik Khatri, who is a development manager in Siemens, and he's personally associated with us in our research. Mr. Arendrajit Pal, he's a postdoc researcher. Mr. Aridit Jatta and Ms. Piali Ganguly, she's a TCS fellow research. She works in IoT and blockchain. So to start with, the motivation of our lab to develop a holistic infrastructure of the digital infrastructure for water resourcement, distribution, usage management based on data-driven analytics model. To initiate industry and academia developing digital solutions for our country and other countries which have a similar type of habitat, climatic conditions, mainly Asian countries, and organizing training and workshop programs to disseminate and enhance the knowledge of analytics and AI in the field of water informatics. So these are some of the conferences and achievements that we have been doing since last 2 years. So we have a Springer series of book series where we publish our research work, and Professor Ramlan Chakravarti is editor of it. So if any of the states want to collaborate with us with the data, we would help them with the analytics. So this is a patent that had been filed in 2020 in leakage detection that was done on not only monitoring and forecasting of the water consumption, but also in leakage detection. The extension of this patent has been published in a reputed journal that you can see. This is another time-based series stream flow of 3 Georges Dam that we had done in 2021. 3 Georges Dam, as you all know, is the largest dam in the world, situated in China. So this was published in IEEE. And regarding the water quality management, we have developed a multi-fog based water quality management system. This fog system is that whenever you sense a data in, we call it edge analytics, from the sensor based. Next layer, we do not purposely put the cloud because of the computational cost and overheads. We have an intermediate layer that already Harish sir and sir was speaking about, that LoRa will be a gateway so that the data is collected in a gateway. The analytics is performed in the fog layer and the output or the analytics is given in the cloud layer, so that the whole bulk of data do not go to the cloud and overcrowd it. Because whatever we need, we will transmit that through the context aware routing. So this is my Please latest share the screen, ma'am. Please share the screen. Sorry? Please share the screen. We are not able to see the screen or presentation. Share the screen, I don't understand, sir. Presentation screen share, ma'am, please. This one. This one. It is here. It is here. ठीक है सर, हर से सही बोलेंगे ना हम तो। Yeah, it's okay now. It's visible.
So to start with, this is a recent paper that we had published in World Water Congress IWA 2022 in Copenhagen. So here we had applied artificial neural network, feed-forward network, to detect the leakage detection. So this is a video of the dashboard of Jal Shakti, which I would skip because it has already been demonstrated in. दिखाएं sir. This is a short video showing the dashboard of the JJM, and we congratulate the JJM mission because in 2 years, the development that has been done in 14 states is commendable. With lots of problem, lots of hurdle, because we deploy the sensors in our lab and we know the difficulties of handling real-time data, analysis of real-time data and publishing in the dashboard. So I really congratulate the whole team for having this mass deployment of sensors and having this real-time data presentation. Thank you. So the factors affecting the water consumption in rural areas can be categorized into some major points. And surprisingly and fortunately, all these points have been covered in JJM. The number of habitats, the population size of the town, the cultural seasons, because the water consumption during the festive seasons are more, lifestyle, living standard, that was mainly concerned with the cities, smart cities, but now the rural areas are also being adopting different types of closets, different fancy items where the consumption of water increases. Industrial and commercial events, if the population has industries in its belt, then the water consumption increases. The quality of water, if the water quality is good, we see that the consumption of water is more. Duration of water supply, if it is intermittent, then the water consumption is low. And if it is a continuous 24 hours supply, then obviously the consumption will be more. If we introduce metering system, the rate of water demand decreases. System of sanitation, the more advanced the system is, the more consumption of water. Cost of water, if the cost of water increases or you impose some cost on the water, then obviously the consumption will decrease. Age of the community, if the community or the village is new, then for its all infrastructures and everything, the water will be consumed more. Pressure in the pipelines. If the pressure is more, unfortunately, the water consumption is also more. So the sensors that we have deployed in the networks, if we can monitor them and control them, we can control the water demand consumptions. So I would like to emphasize the importance of JJM in present and in future. The first point is very obvious because all the health department personalities and experts are here, because the more the quality of the water is ensured, the better it is. So analyzing the water demand is to help the effective plan of water distribution to save the water, because the water consumption depends not only on the, it has already been described that the number of points that the water demand depends on. If we understand how and what is happening in a local area, we know how to control it and save water. Next is the controlled water flow will not only save water, but also reduce leakage, because when we detect a leakage, and we can control the flow of water, the leakage of the water simultaneously decreases. Similar type of habitat would help us predict the parameters of the region with same climatic and regional conditions.
As we have seen in the dashboard that from the same district, number of villages are taken into account, number of sensors are deployed, number of monitoring has been done, huge cost is involved. But if we can analyze the data of the same geographical region, the same climatic region, then we can predict the same thing that is being monitored. And that we will show in the preceding slides that with time series analysis, the forecasting is above 90%. That is very good for analytics. Effective pricing may also be proposed using the data analytics. The IoT system will majorly affect the water reservoir level forecasting, population forecasting, water level available per person, which is 55 LPCD at present, supply water demand versus forecasting. This, the temporal and spatial variation studies will help us predict, analyze, and control water demand in other regions of the countries as well. This temporal variation is the time series variation, and spatial variation is the variation of the same data in different places. We can correlate the data not only of the same place, but also with the different regions, how they are correlated and how they can be predicted in future. So this is a short thing that the concept of data lake may be introduced because the IoT setup is very advanced in the JJM board. So the next step can be the introduction of data lakes for water informatics, which is not still introduced in many of the advanced countries, and providing real-time data to industry and academics like us for extracting valuable insights. Leakage detection, localization, and control can be done with the help of IoT and machine intelligence, which we have already published, and I will show you a short presentation on it. And proper planning of the IoT setups and detailed study of the real-time setups can be done. And introduction of graph theory will help us to locate the exact place of the sensors where the cost can be reduced. So this is a systematic thing that has already been deployed in JJM. The pipes with the sensors, the data has been collected, the modeling of the data, this is to be done, and visualizing is already done with pump asset monitoring and energy consumption. What we suggest is to introduce the data lake. So this is a definition of the data lake where structured, unstructured, video, images, all type of data can be pooled in a lake. And from there, the data can be processed, and then different providers can take the insights as well as the data, what they require in their format from the data lake. To simplify this, this is showing the different types of data that can come into the data lake and what we can give. We can quality of service, flood management, water quality, whatever is the requirement of different agencies can be maintained through a data lake. So here we can see that the multi-source data collection is already been done. Pre-processing of data, data segmentation, and the AI part is still remaining where we can contribute in the analytics. So these are some of the research works that we have published. So this was the patent work that we had done. So this was the web interface of the 24 households that were using, and you can see that through SVM, we could detect that real time there is leakage or there is no leakage or leakage detected. So the principle was, since it was an intermittent flow, during the intermittent flow, if there is no flow of water, then there is no leakage. And if there is flow of water, there is leakage. This is a very simple thing, but this could be applied in 24 household things. But whenever the things become complex and there are 20,000, 22,000 nodes or households in one locality, the things need to be improved and sufficient modeling has to be done in the algorithm. So this can be extended, and hence we have found got a patent in this in 2022. Okay, sir. Yes, sir.
So here what we had done was we had 2 tanks, overhead tanks that was cylindrical in nature. So since the tanks are cylindrical in nature, we have that pi r square h is the volume. So we just had to put a ultrasonic sensor so that could detect the water level difference that was being consumed. That can also be detected by float sensors as suggested by Harish sir and associates. So our main motto is to detect the difference in height. So the difference in height H1 and H2 will give you the volume of water consumed in that cylinder. And if it is an intermittent flow and you do not expect that amount of water to be consumed, you find a leakage. So we could detect a leakage. But the limitation of this was if there are some more people in my house, if today some more people come in my house and I consume more water, I will detect a leakage because the volume of water is more. So what we did, we along with the volume, we included the time of consumption. So if continuously it is being consumed 24 hours, then surely there is a leakage. So the leakage detection was foolproof and we got the patent. So if anybody is interested, we can share the whole thing with them. And these are some of the works that has cited our work. So this is another Sarima model, which was applied in 4 dams of Chennai to predict the water level and consumption. This is also published in IEEE. So rather than going into details, if anyone is interested, we would like to share our research work. So this is the prediction graph. The blue line is the actual and the yellow line is the forecasted. So you can see that the forecasting is not 90% because the data was only of 5 years. The more the data, the accurate is the prediction of the analytics model. So we will show you in the preceding slides that when we got 10 years data, the prediction was better. So the next work was the 3 Georges Dam. So we got the data for 30 years. So you can see that we have applied the same time series modeling here, but the forecast model and the inflow rate has matched more than 90% here. So more the data we collect, the better is the performance and the accuracy, because the deviation, everything has been captured. जितना आप मशीन को सिखाएंगे वो उतना अच्छा प्रिडिक्ट करेगा आपके लिए. आप भी जब कोई डिसीजन लेते हो, यू टेक द डिसीजन डिपेंडिंग ऑन द डेटा, द थिंग्स दैट यू हैव गॉन थ्रू इन द प्रीवियस someday. So that thing you conclude in your future predictions or decision making. The same thing is done by the machines. The major thing in the machine is that it can handle a lot of data and the human error is very less, which was one of the major problems in O&M for you people, that they have to visualize the thing and then take decisions. The more you make it machine dependent, because a simple SMS or an alert is very easy to create. So if you can cluster the data, and if one of the data is also missing, you give an SMS to the concerning department or the person who needs to check it, then I think that thing can be done, because that is very, the GSM SMS is very easy and we often do it in our lab. So for you people, it won't be that. And I would request you to implement everything in the fog layer. Do not go to the cloud, because the latency and the delay will be huge. So this is the comparison of our work that we had done. This is the leakage modeling. So this was a simulated model. This is EPANET, is a US software that we had taken. This is a Hanoi model of Vietnam. And you can you can give the demand of each node. And for each this pipe, the flow will be given. So what we did was we simulated this model, and then we induced leakage in each of the nodes. Purposely, we induced a leakage, and the flow of each pipe was changed. So for each node, each time we induced a certain amount of leakage, the total water demand
if the total water demand is considered D, then 0.01% to 1% of that total water demand was taken as the leakage range. That is the theoretical leakage range. And we had divided that into 30 or 40 equal parts. And for each leakage, we induced each leakage in each node and recorded the flow of the pipe. You can see here the flow of the pipe 1, pipe 2, pipe 3, everything is there. So when we train the model, that whenever you find this type of flow, you need to detect that the leakage is in this node. So vice versa, what you people will have, you have the flow sensors, you get the data from the flow sensors, you feed it into our model will tell you which node is default. So that is already deployed in Sirohi, because the advanced level sensor based is already there in Sirohi. So fortunately, what we are thinking for the last 2-3 years, you all have been developing that physically. And that is the reason I'm so excited and like to congratulate the JJM board. So this was the artificial intelligence mathematical model. So this is what we do in our lab. A very good afternoon to all the participants present in the workshop. I am Dola Gupta, DST women scientist, pursuing my research under the mentorship of Professor Ramlan Chakravarti. So this I would show you a basic what we presented in IWA International Workshop. Sensors and data sensing using different microcontrollers, a simple implementation of fork architecture, and publishing the real-time data in sensor cloud modules, which we have been implementing in the University of Calcutta. So you can see that this is a very common architecture for analytics we have procured in the water informatics lab in the University that we have in our lab. This is a water rate UNO board. This is an open source software. So this is a real-time system with the pH sensor that we are deploying. And through we are measuring the pH value of water, that should be close to 6.5 to 7. Similarly, this is a setup what we had done in the lab using the Arduino Uno. Cannot communicate the protocol Python, and the OS that this is a Node MCU module. This is a Raspberry Pi, OS, which needs to. This is NI Myrio 1900, which is used in microcontroller. We have procured it, and the processing speed is very high. This has an embedded FPGA kit in it, and to and test if there are communicating. This is the fork architecture that was I was talking about. Data to this Raspberry Pi module. So the upcoming areas of our lab would be leakage detection, localization, and correction. Detection and localization has already been done, and we would move to actuation. We are also studying the characteristics of soil and hydrogel, because that is also a part of water detention. And water usage, demand and supply, and wastewater management and usage with TERI. So this is the way forward. We would request the ministry to share the real-time data with us so that we can develop some new holistic models. And this is the contact. You can please contact us if anybody is interested. Thank you all for your patience hearing. Can I ask you one question, madam? Sure, sir. First of all, thank you very much for such a nice presentation, and the work you are doing is really commendable. So I just want to share with you a practical problem of a public health engineer or waterworks. We have been augmenting our water supply schemes since last 30-40 years. And there are layers of pipeline, especially in our distribution system, for which no map is available even. We are having new systems, but the old system cannot be obsoleted because of practical problem that there are certain connections from there and you can't close those connections. We don't have the map of them. And the problem is in India, I think 40%, more than 40% is the unaccounted for water, which is mostly the leakage. So can you develop such a system which can locate those old pipelines so that we can plug them? We don't have the map. And it's a sort of, because that is an area where action needs to be taken.
There have been 3, 4, 5 reorganization of that distribution system, and no maps are available. And we are facing, especially this problem is much more in urban area, but in rural area also, where there are cluster of villages. Thank you. Sir, for detecting or for anything, you need some physical parameters that differentiate the old pipe with the new pipes. So that parameters, if you can suggest us, we will develop a model. And one thing which I would like to explain is thermal imaging through drones, which is very much applied in the European countries. Because the thermal imaging will give you the, if there is a leakage, the flow of water, everything will be seen in cameras. So if there is difference between the old pipe and the new pipe through thermal imaging, it can be very easily detected without any map. This is done in Europe very recently. They have done, and you can search that in YouTube. If you insist, I can search and show you because the thermal imaging is there. But this is a very real problem, madam. If you could do in your research Sir, organization. you need to give us the details. You need to I mean, define the problem. You can we'll take give a you pilot. Solution. You can take a pilot project and get it done. Sure, That's sure, the sir. problem. Sure, sir. Thank Thank you. you so much. Exactly, sir. Because if we can detect the problem in underground, so above the ground it is no problem for a drone, and drones are of different sizes now, and we can very well control them. It can be controlled through a very narrow lane also to detect the damages. That can be done, sir. I will share you the YouTube link I have in my WhatsApp, so you can go through and just. Thank you. Yeah, Mrs. Gupta, I have a few technical questions Sure. for you. You had shown in one of your publications that you have done flow rate forecasting using SVM, you said. Yes, sir. How do you use SVM for a flow rate forecasting? Sir, Forecasting is on the real time. Sir, real for value. every artificial intelligence technique, you have two things. One is the regression model, another is the prediction model. No, regression is a type of forecasting. Also. Yeah, so we have used SVM as regression because what we do, regression is in mathematical sense, it's a straight line. Not necessarily. Not necessarily. If it is not including the non-linearities. Yeah, So you can of course have a non-linear regression model. I am supposed to give the total you can mail to me, sir. I can give you the total detail because the non-linearity can be taken into account with SVM. Because SVM is a non-linear classifier. Yes, sir. And the non-linearity part, we had introduced the modified SVR that could detect this. So whenever you have a non-linear part, you have to introduce the damping part. Right. I'll discuss that over Sure, sir. So you because I had 52 slides and Pradeep sir said. That's all right. That's all right. So analyzing water demand, you said, right? Yes, have you tried seasonal detection of seasonal patterns and daily patterns? Sir, the study that we had done for Chennai, it had that seasonal thing. So whenever there is a seasonal thing, that is after a regular interval of time, the same cycle is repeated. So for that, it will happen if there is a periodic nature in the time series. Specific geographical region, sir. When you increase the area, then it will be random. So not exactly random. You'll have to capture the socio-temporal pattern there. So yes, what we had seen was for 3 Georgia's Dam, the whole data was random. So we did not have the Sarima to apply. We could easily apply Arima. But for Chennai, we had to take the seasonal part out, and then only we could apply time series analysis. Did you use multivariate time series analysis? No, sir, not yet. We are using it. You'll have to, because see the type of data that is there. I've also looked at deeply into the data. So you need to use multivariate. So we would soon communicate with LSTM and RNN. So the same thing. Yeah, maybe much beyond that. And in your practical data, did you come across any multidimensional outliers? Practical data we don't get. What we got was the data that was given as a from a source from a publication. So it is already exploratory data analysis is already done. The data is already there. So from the JJM dashboard, we still need the data from JJM dashboard. You need to also make sure that you don't have any multidimensional outliers in that. Yes, sir. Obviously. Right. We need to clean the data. Right. One more question. Can you go to your forecasting of the time series when you said 90%? What do you mean by 90% there?
that blue and yellow Yeah. lines. That is for 3 Georges Dam. Yeah, this one. So this is what I have shown for only 2020 to 2021. 1 year data. But this is 2020, 2012, right? This is what? No, it should be 2021. That might be misprinted. I mean to say that it is only just for 1 year. 1 year daily data or? This is daily data, sir. Daily data. So at what time is the data collected? Sir, it is not mentioned there, but since it is at given, the same time, I suppose we it's at the assume that same it time. is for the same time. And this is the training data or the test data? Sir, actually the training and test already has been done. This is the forecast. What we could do was, we predicted for the 20 years, and with the actual data, we predicted in our model, so that we could calculate the exact thing. No, just what I want to ensure is that, is this the training set data, test set data, or the validation data? This is the validation data, sir. So how long is this validation data? Sir, this is for last 5 years. Validation, so last 5 years means you are looking at such a huge quantity Yes, of sir. forecasting? There's a problem here in the forecasts, because if you look at the time series forecasts, you find that the forecasted values are to the right of the actuals. So it's actually indicating a random walk presence there. Sir, actually, whatever you give in the machine, you'll get the output. No, the no, no. the You'll more have the to- data is accurate, the more. So this machine is a time series model. Yes, sir. It's an S-ARIMA model that you said. No, sir, this is purely ARIMA, because the data was totally random. The So Chennai what- was ARIMA. So what was I in ARIMA here? It's integrated value. Yeah. What was the order? Sir, order was 2, 1, 2. Because I suspect the data is not stationary yet. Yes, sir. That is why we did the ADF test, and the data was stationary, But that random. I'll talk with you later. Sure, sir. I'm happy that I could answer. Ma'am, you have recommended the usage of fog architect instead of cloud. So is it being used practically in the country anywhere? Sir, what the presentation, what Harish sir and associates from Tata Trust has already given you, they have given a gateway so that the whole thing is not given to the cloud. But now the current situation is everything is given in the cloud, 1 day delay. But if the actuation is done, because every time you do not need, the Bihar person does not need to know what is going on Assam in daily basis and every point. So you put the data there and overcrowd the system. So what you can do is you can, and the actuation part, that should be done in the fog layer. So that should be localized, and the context aware which is needed and which should be published in the public domain, that should be given there. So that is where we introduce a new concept of context aware IoT setups, where you can differentiate in different levels so that the highest level is not overcrowded with data. So you will have latency, you will have everything, because already in JJM board, you will find that the data is 1 day late, because the cost incurred is very high, because you are giving the whole chunk of data there. So that is a problem. So these are all supervised models, all supervised models. Sir, see, any transformation from time to frequency domain is done on the basis of the data, is done on the basis of the equation. So when you do Fourier series or Fourier transform, why do you do Laplace transform? Because you cannot converge that. You need an external damping factor, that is e to the power sigma t. So if you introduce an e to the power sigma t with e to the power j omega, that S domain comes with sigma plus j omega. So whatever design or implementation is done, that depends on the data, type of data, correlation of the data with each other. So you need to study the data first and then apply, because every algorithm cannot be applied in all data. That should be done. That is reinforcement learning. Yes, obviously, but the overhead will be more. Sorry. Sir.
that data from they should do. They should approach. They already have data somewhere. They can approach and get something out. Sir, when we are applying a data, whenever we are doing sensor-based analysis, you have something in your mind that we are taking this data for pH value. The water quality should be like this, or because randomly you cannot put sensors and take data, and this is of no use. You have the data, you can divide that into two major divisions. That is the water quantity and water quality. So water quantity, there this demand supply mapping to the population, the blockchain, the everything can come there. And if you see the water quality thing, then different algorithms can be applied, and the actuation or the decision making can be taken accordingly. So until and unless I have been given the exact system and the data, the commenting on that is little bit difficult. So I would request you all to communicate your problems and the system, the real-time system, because for different pipelines you have different sensors. The cost of it is different. For 6-inch diameter, the electromechanical sensors for flow sensors are different cost. For 1-inch diameter, it is different. So everything has a purpose. So I would request that whenever you are deploying sensors, the planning can also be done by the analytic model. Thank you, sir. Thank you. Blinker disconnect or
Disconnected.
বলছি পোডিয়ামে স্ক্রিনে দাও পোডিয়ামে স্ক্রিনে দাও তুমি একটু নিচে আসো হ্যালো অডিয়েন্স হ্যাঁ হ্যাঁ Good afternoon, sir. So we are delighted to have with us Mr. Bhikas Shil, Mission Director and ASMD from National Jal Jeevan Mission with us. I'll request Bhikas Shil sir to share a few kind words with us, with all the participants. And Thank I'll request all the participants to kindly settle down quickly. Thank you. I hope I am audible. Yes, sir. Okay, thank you so much. So a very warm welcome to all the people who've joined in this workshop from states. As you're all aware, Jal Jeevan Mission is at a critical juncture of its implementation. We've so far reached around 57% coverage, and we are rapidly moving towards the target of providing functional household tap connections to all the rural households in the country by 2024. Now, when I say functional, so the emphasis is on functional. And as you're aware, functionality includes the aspects such as quantity, quality, and regularity. Now, as we implement the schemes and set up the infrastructure, I think we all have to start working on making these systems sustainable, and also to have a system whereby we can ensure that the taps that are functional at the beginning of the scheme remain functional. Now, in the conventional model, uh, what we would usually do is set up some grievance redressal mechanism and address those grievances on an expeditious basis. So as and when a person has a complaint about either the quantity or the quality or the regularity, we would then spring into action and um take remedial steps. But that has its own limitations. First of all, the customer or the people to whom the connections are given, they need to understand what is functionality, and it's a very, very difficult task to communicate to all citizens in terms of what does quantity, quality, and regularity mean. And therefore, people, even if they are getting some water, may not actually raise a grievance because they may be satisfied with the suboptimal service levels. Therefore, given that we now have internet connectivity across the country and the connectivity is improving every day, the mobile penetration and various kinds of connectivity infrastructure are rapidly penetrating the rural India. Uh, Use of technology for monitoring service levels has therefore become one of the central themes in the JJM. And accordingly, looking at the need for having IT-based systems for monitoring of functionality, the NJJM had taken up pilots
for IoT devices in more than 100 villages in the country. We've had significant learnings through these pilots. Many of these pilots are now being handed over to the respective state governments for, further scaling up and replication. So we thought that, this is just the right time that we should, as we implement more and more infrastructure, we should start focusing also on setting up systems for monitoring service delivery levels. And IoT based devices and sensors do provide us with that opportunity. And accordingly, we had advised the states sending guidance on the framework for IoT systems in the state, under which we had suggested to the states that a IoT cell may be set up at the state level, and the states, according to their context, should take up these systems, and especially those states where implementation work is almost over or is already done. So there are 7 states and UTs which are now Har Ghar Jal reported. There are a few more which are beyond 95%. There are 3, 4 states which have just crossed 75%. And I believe that during the course of this year, they will be achieving saturation or near saturation. So this is just the right time to start working on these systems so that we keep the schemes operational. We monitor we are in a position to monitor levels. And therefore, what we had said was that states should start planning for it, set up an IoT cell at the state level, and that cell should have requisite capacities and understanding of the IoT systems. Uh, Looking at the response so far, because we've seen this response only from a few states. By and large, we thought that it was necessary that we engage with the teams working at the state level on the IoT systems, or the departmental heads, to understand what are the reasons, what are the issues, why is this not moving at a pace at which we would like it to. So with that background, we decided to hold this workshop. I'm sure that the teams working in the states on the IoT systems are attending this largely in physical mode. Some I can see in virtual mode also. Uh, uh, um, as you're aware, the IoT systems should normally, while we plan for such systems, it's important to keep costs in mind. Uh, so the O&M, so this should not become a burden on the O&M cost of the system. Uh, the capital cost is of course supported under the JJM. The O&M cost will have to come from the user charges. So we've been suggesting to the states that according to your own local context, wherever you can plan these, wherever connectivity is reliable, we've also given guidance in terms of what kind of IoT systems to be used for smaller schemes, for medium-sized schemes, and for larger schemes. But I believe that uh, if these things are worked out at the time when we are implementing the schemes, you can derive a lot of efficiencies in terms of costs. So we believe that the cost of an IoT system in a village should be around 5 to 8% of the total capital cost of the scheme. Uh, and wherever there is a need, our team is there to support the state teams. Uh, so what I would suggest is that during the course of the next 2 days, uh, please do think about how you would like to progress on this front. What are the issues and challenges that you are facing? We've also done a bit of work on the GEM side. So now on the GEM, some ready-made contracts are available which the states can use for IoT systems. So please develop an understanding of such systems that we have put in place. Uh, any suggestions, any feedback, any challenges that you're facing, please do bring out those so that everybody benefits.
from the discussion, and we are able to tweak our approach, our contracting system, and our engagement system wherever necessary, and in whatever way necessary. Uh, Lastly, what I would suggest is that because the technology is evolving very fast, and it'll keep on evolving. Uh, Therefore, our approach should be that as and when new technology comes in, our system should be designed in a manner, our contracts should be designed in a manner that we are able to take advantage of the newer technologies, which will invariably come at a lower cost. So, one of the options that we have been suggesting is rather than procuring a sensor, because then you are stuck with the older model sensor. Within 2 years, 3 years, better sensors will be available, cheaper sensors will be available, more efficient sensors will be available, more accurate sensors will. So therefore, our approach perhaps should be to procure services rather than procure products. Because if you procure services, you can then structure your contract in a manner that as and when a newer version of a device is available, your vendor or agency should be able to derive a better margin from the same contract. So it should be in the interest of the agency contracted to give you the best possible, service uh, at the least possible cost. So therefore, a service model perhaps will be a better option, but then of course, every state has its own context. Service models would require a certain minimum business guarantee for them to become viable. So if the scale is small, a service model may not work out. If the scale is adequate, ambitious enough, then perhaps service model is the best way to go, because then you are basically paying for the service. So, for example, if you take it in 1,000 villages, rather than buying 3,000 sensors, you say that we will need these readings from the sensors in a centralized control room at a certain periodicity, maybe on a daily basis, and based on the benchmarks that we specify based on BIS 10500, these are the kinds of alerts that the system should generate. And I believe it's important that we fix the scope of work very clearly. The scope of work for the IoT based systems cannot be that the vendor will also take remedial action. Remedial action will invariably lie with us, and therefore the service that we can hope to get efficiently from the vendor who's providing you the IoT solution is perhaps should be limited to getting you the actionable intelligence based on these devices. Uh, so therefore, we would succeed if we keep things simple. So if we try to do too many things, then you will complicate the contracts. Then all kinds of things will come in, like consortiums and things like that. So therefore, we believe that we have done reasonable work. We have seen the pilots. We understand these systems. We've also designed some contracting system through GEM. Please take full advantage of it. I believe that these 2 days provide us an opportunity to do, introspection in terms of where we are. Have we actually thought about this? If some of you may have thought about this, some of you actually may not even have thought about this. So can we start thinking about such systems? And if by the end of the day tomorrow, all of us can have the sense of confidence that this is something that is required, this is something that can be done, this is something which will lead to benefits for the people, I believe we would be in a very good place. So with that, I thank you for joining us for this workshop. And I wish you all the best for the discussions. And I'm sure that post the workshop, things will move at a much faster pace. Thank you.
If there is any question at this point, if you'd like to ask me anything, please do so. Any questions from the audience? Thanks a lot, sir, for your time and for your kind words and for taking us through the workshop details. Thanks a lot, sir. Thank you, and I'll now be logging off. I wish you all the best. Thank you. Sure, sir. Thanks a lot, sir. So in next session, we have a panel discussion with states on the importance of IoT-based monitoring. For that, we'll call upon a few states on the stage to share the experiences. And the panel discussion will be moderated by Professor Chair, Sir Amit Mitra sir here from IIT Kanpur. And I'll call to the states, call to the stage representative from states like Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Gujarat. So we are arranging the chairs. So we'll be starting up in another 5 minutes.
हम लोगों का मेन कंसर्न था सर, जो डाटा हमारे पास आ रहा है रदर देन ये सर्विस प्रोवाइडर के पास जाए उसके बाद हमारे सेंट्रल सर्वर पे जाए सर, एनजेजेएम के सर्वर पे, उसकी बजाय हमारा फोकस था कि वो स्टेट के पास होना चाहिए, उसका ओनरशिप स्टेट के पास होना चाहिए। बिकॉज डाटा अल्टीमेटली हम लोग जो भी काम करेंगे वो डाटा पे करेंगे। तो उसको लेकर सर हमने एक स्टडी किया ना, हमने देखा यहाँ पे कि अभी टाटा ट्रस्ट काम कर रहा है और काफी दूसरी जगह भी कुछ और एजेंसीज काम कर रही हैं। तो वो डाटा पहले उनके सर्वर पे जाता है, देन वहां से फिर वो सेंट्रल इस लेवल पे जाना था। हमने छत्तीसगढ़ में ये प्रयास किया सर कि हम लोग एनआईसी जो हमारा इनफैक्ट स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे भी हमारा टेक्निकल कंसल्टेंट है और वही पूरा हम लोगों का ये पूरा सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, उन्हीं के थ्रू हमने सर पूरा प्रयास किया कि हमारा पूरा डाटा उन्हीं के पास कैप्चर हो और वहां से सीधा सेंट्रल सर्वर पे आए। तो शुरू में कुछ चैलेंजेस थे सर उस डाटा को लेके। एक्चुअली में पब्लिक आईपी एड्रेस से जो होता है वो एनआईसी प्रोवाइड नहीं करता है फैसिलिटी, बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज मेजर हो जाते हैं उस केस में कि आप किसी भी डिवाइस से सीधा डाटा वहाँ पे लेना एक इशू होता है, चैलेंज होता है और उनके लिए भी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया सर कि हमने अपने स्टेट लेवल पे एक सर्वर बनाया, उस स्टेट लेवल पे वो पूरा डाटा कलेक्ट किया, बट उसको फिर वहाँ से सेंसर से अलाउ करना उनके सर्वर पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक एपीआई सर्विस बनाया है सर, उस एपीआई सर्विस के थ्रू वो डाटा पहले वेंडर के पास गया, वेंडर के एपीआई सर्विस के थ्रू हमारे पास आया स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से फिर हमने सेंट्रल क्लाउड पे पुश किया। अब मुद्दा ये आ रहा है कि घूम फिर के हम लोग डाटा वापस वेंडर के पास जा रहा था, बट हमारे लिए वो एक मजबूरी इसलिए था कि मॉनिटरिंग अगर करना है कि डाटा हमारे पास प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, टाइम से कहीं कुछ फील्ड में प्रॉब्लम आया तो वो इमीडिएटली वेंडर को मालूम पड़ता है कि हाँ ये डाटा ठीक नहीं आ रहा है। उसके लिए सर फिर हमने अपने लेवल पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है जहाँ पे कि हम लोग उस चीज़ को समझ सकें कि अगर कोई डाटा में प्रॉब्लम आ रहा है, रेगुलर डाटा नहीं आ रहा किसी सेंसर से, लाइक अब हमारा फ्लो मीटर है, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली फ्लो सेंसर, तो वो हमें मालूम पड़ सके रेदर देन कि वेंडर हो हमारे को वहाँ से बताए। तो हमने उस चीज़ को सर अपने आप पुश किया, सीधा हमने अपने स्टेट लेवल पे लिया है वो डाटा सर, और स्टेट सर्वर पे लेने के बाद फिर उसको हम सेंट्रल सर्वर पे पुश कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक छोटा सा वो चैलेंज था जो हमने देखा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट ने उसको एनआईसी के थ्रू नहीं किया है सर काम पूरा। तो हमने एनआईसी टू एनआईसी पूरा उस पर वर्क किया है सर, और हमारा पूरा डाटा आज की डेट में जो जाता है वहाँ से कलेक्ट होके वो सीधा सेंट्रल सर्वर पे जाता है जो कि अपने पोर्टल पे दिखता है सर। इसके अलावा सर जो बात उठ रही है कि ओ कैसे होगा, क्या होगा, तो ओ अभी जैसा सर ने बताया कि आई थिंक जैम पे तो 3 साल का मेंटेनेंस दे रहे हैं, बट 3 साल के बाद क्या होगा, तो वो सर उस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा एक विचार करना चाहिए मेरे ख्याल से, चूंकि अभी तो 3 इयर्स में चल रहा है। तो एक दूसरा चैलेंज ये जो भी हम लोग फेस नहीं कर रहे हैं, बट ये चीज आएगा सर आगे जाके कि उसको कैसे करना है 3 साल बाद, दोनों सर, कॉस्ट एज वेल एज टेक्निकल सपोर्ट। बिकॉज हम लोग पूरी तरह का 3 साल बाद भी वेंडर के ऊपर ही रहेंगे डिपेंडेंट, तो वो हम लोगों के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर। तो बाद में अगर ये काम नहीं करता, एक बार वो चीज सिस्टम में आ जाए और हम लोग उसके हैबिचुअल हो जाएं, हमारे ग्राम पंचायत भी उसकी हैबिचुअल हो जाए, वो डैशबोर्ड पे देख रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बट अगर वो प्रॉपर नहीं चल रहा है तो फिर क्वेश्चन उठने लगता है। तो मेरा ये सोचना है सर कि हम लोग 3 साल बाद जो भी करेंगे, मतलब स्टेटस बनेगा हमारे सामने, उसको भी हम लोग फेस करने की तैयारी भी अभी से कर लें। तो मैं अपने एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है सर कि हमने किस विलेज में ये काम किया है और अभी उसका क्या स्टेटस है सर। तो पायलट विलेज हमारा बरौंडा है जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है सर, उसका आरंग ब्लॉक का है। 508 हाउस होल्ड्स हैं, टोटल पॉपुलेशन इज 2628। वहाँ पे सर हम 8 प्रकार के सेंसर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज फ्लो मीटर, फ्लो सेंसर यूज कर रहे हैं सर, देन प्रेशर सेंसर, प्रेशर मीटर इसके लिए यूज हो रहा है, देन लेवल सेंसर, ये हमारा वाटर टैंक का लेवल बताता है। क्लोरीन सेंसर, ये जो बात कर रहे हैं सर क्लोरीन सेंसर की, क्लोरीन हम लोग अभी केवल इसी पॉइंट पर ले रहे हैं जहां से हमारा ट्रीटमेंट के बाद आता है। देन पीएच सेंसर, टीडीएस सेंसर, लेवल सेंसर एट दैट टैंक लेवल, देन एनर्जी मीटर, एनर्जी लेवल। देन इट इज अ पिक्चर सर जो हमारे यहाँ दिखा रहा है, ये प्रॉपर सर हम यहाँ इस पे फोकस करना चाह रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाएगा, पर देखिए कितना प्रॉपरली यूनिट को हम लोगों ने सर सिस्टमेटिकली वहाँ पे बनाया और इट इज लॉक्ड। ये पूरी तरह लॉक है ताकि इसको कोई छेड़छाड़ बाहर का पर्सन ना कर सके। यूनिट के अंदर का हमने सिस्टम दिया है सर जहाँ पे ये सारी चीजें लाइन से लगी हैं। दिस इज द प्रोसेसर सर, और ये हमारा जो इसका इंटरनेट का मॉडेम है, ये मॉडेम काम कर रहा है सर यहाँ पे। तो ये डाटा स्कैनर है सर, यहाँ से डाटा आता है, प्रोसेसर होता है, मॉडेम के थ्रू उसको सेंड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें सर अंदर वेल हाउस्ड हैं सर,
और उसको यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से लॉक करके रखा है ताकि कोई छेड़छाड़ करके उसको डिस्टर्ब ना कर सके सर। देन इसको भी देखेंगे प्रॉपरली। हमने यहाँ पे सर जो हमारे टीडीएस सेंसर, फ्लो सेंसर एंड तीसरा आपका प्रेशर सेंसर, तीनों सेंसर को यहाँ पे पाइप के अलोंग फिट किया है सर, और उसके बाद उसका भी प्रॉपरली कवर बना के उसको सेव किया है सर। तो जो हम लोगों ने प्रयास किया है कि किसी भी तरह का O&M मिनिमम रहे, कोई डैमेज ना हो, कोई अननोइंगली भी उसको डिस्टर्ब ना करे सर। तो ये प्रॉपर इसको हाउसिंग करके यहाँ पे किया गया। ये हमारा सर क्लोरीनेटर का सिस्टम है सर, जो ये क्लोरीन यहाँ से मिक्स होता है, क्लोरीन सेंसर से उसको सेंस करके उसका रीडिंग देता है। देन डिजाइन टाइप इज अवर इंटरमीडिएट सर, जैसा भी डिस्कशन हुआ है कि हम लोग बेसिक के नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे गए हैं, अल्टीमेट पे भी हम लोग नहीं जा रहे हैं जो हमारा एडवांस है उस पे। देन जो स्टैंडर्ड है सर, मॉनिटरिंग द फंक्शनलिटी ऑफ द स्कीम, डेफिनेटली ये तो सब मतलब स्टैंडर्ड हमारे पैरामीटर्स ही हैं। एंश्योर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बीइंग सप्लाइड 55 एलपीसीडी एंड टू प्रिस्क्राइब वाटर क्वालिटी एज पर BIS 10500। देन मॉनिटर द फ्रीक्वेंसी एंड periodicity ऑफ सप्लाई। देन मॉनिटरिंग द ग्राउंड वाटर लेवल एंड एंश्योर टाइमली इंटरवेंशन। अगर हमारे को सोर्स ऑगमेंटेशन का जरूरत है सर, तो वो चीज़ हम लोग टाइमली कर सकें। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारा आउटकम उससे जो आ रहा है। देन इट इज़ नॉट न्यू, इट इज़ नोन टू ऑल that this is what challenges and IC support in IoT pilots। ये सर जो मैं बात कर रहा था कि हम लोग हार्डवेयर सेंसर इंस्टॉलेशन तो हो जाता है, वेंडर रिसीव्स सेंसर डाटा फ्रॉम IoT पायलट लोकेशन, देन स्टेट सर्वर रिसीव्स सेंसर डाटा फ्रॉम वेंडर via web API, then state server extracts sensor data and store and sends it to GUI with the help of software, then analytics report of IoT location and IC state server। तो ये जो सर हमारा एक चैलेंज था, इसको हम लोगों ने मीट आउट किया है, और हमारा पूरा डाटा जो है अभी सीधा NIC के थ्रू ही जा रहा है सर। देन आउटकम ऑफ IoT, इट इज ऑल्सो सर बट ऑब्वियस, जो हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं सर, एंड काफ़ी इस पे पहले डिस्कशन भी हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट सर जो हम लोगों ने अभी तक किया है एक साइड पे, एंड पूरा कोशिश ये किया गया है कि बहुत प्रैक्टिकल हो सर उसका इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत सेफ रहे, O&M बहुत ज़्यादा ना आए। अभी हम लोगों के पास अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें कि सेंसर फेलोर हुआ या काम नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल से सक्सेसफुली चल रहा है सर, और डाटा भी हम लोग रेगुलरली रिसीव कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much. Sir, should we take questions now or later? Yeah, later at the end, maybe Okay. discussion. Thank you, sir. So your presentation. Oh, that's all right. So your presentation is ready? Presentation is ready. We have presentation. Okay, then maybe you can go ahead. So till the time that your presentation is not there, let us hear from him. So please restrict yourself to about 10 minutes. सभी को नमस्कार। आज इतना बढ़िया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रदीप सर को और उनकी टीम को सबको धन्यवाद। हम लोग, मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सुनील कुमार उदिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, PHE इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी IoT के काम ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने इंदौर में भी IoT के काम किया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि योजनाओं को एग्जीक्यूट करना तो बहुत आसान है, विलेजेस में योजनाएं एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन हाँ प्रेजेंट ऑटोमेशन MP जैसा मैंने बताया कि योजनाओं को एग्जीक्यूट करना तो इजी है, लेकिन उनको कंटिन्यूस मॉनिटर करना और उनको चलाना, मेंटेनेंस करना काफ़ी कठिन है। अब क्योंकि गाँव में सारी योजनाएं फैली हुई है, तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि योजनाएं चल रही है या नहीं चल रही है। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम लोग उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। तो हम लोगों ने सेंसर बेस्ड एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है इंदौर ज़िले के लिए। उसमें 331 विलेजेस को हमने कनेक्ट कर लिया है अब तक, जिनमें वाटर सप्लाई चालू हो गया है, और उन योजनाओं को हम लोग अपने यहाँ से मॉनिटर कर पाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है। उस एप्लीकेशन पे हम लोग देख पाते हैं कि कितनी मोटर पंप अभी इस समय चल रहे हैं, कितने मोटर पंप्स कितनी देर चले हैं, कितनी दिनों से योजना बंद है या वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है। ये सब हम लोग अपने इसमें एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो उसी के इसमें मैं आपको एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा उसका।
यदि हो जाता है इनका मिररिंग हो जाता है तो फिर उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा मैं। ये मेरा प्रेजेंटेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्रेजेंटेशन पहले था जी। ये एक हमारे गांव का फोटो है, जिस तरह का हम लोगों ने टंकी, संपेल और बाउंड्री वॉल बनाया है, और इसमें जल जीवन मिशन के लोगो भी लगाए हैं। और ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है, जो सुबह से हम लोगों की बात चल रही है, वो सब लोगों को मालूम ही है। हम लोगों का जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, उसमें हम लोगों ने 2 जगह उसके वो एपरेटस लगाए हैं, एक संपेल में और दूसरे मोटर्स में, जहाँ ट्यूबवेल्स हैं वहाँ पर। तो जो हमारे संपेल जब भर जाता है तो ट्यूबवेल की मोटर पंप ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है, और जैसे ही टंकी भर जाती है तो संपेल का मोटर पंप बंद हो जाता है। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसमें किसी मैन पावर की जरूरत नहीं, पंप को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। जब तक टंकी भर जाती है, चाहे वो रात में भर जाए, जब भी पानी अवेलेबल रहता है ट्यूबवेल में, हमारे यहाँ थोड़ा डेप्थ है, डेप्थ में पानी अवेलेबल रहता है, या गर्मी के दिनों में कम हो जाता है, तो जब जब रहता है पानी, तो वो पूरा मोटर भरने का काम पूरा जो है ऑटोमेशन से हो जाता है। बाकी सिर्फ ऑपरेट करना ही, सिर्फ वाल्व को ऑपरेट करके ही योजना को वाटर सप्लाई करना है, बाकी सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम लोग मॉनिटर भी कर पाते हैं इसको। जो मैंने ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है इसका लिखा है, ये सभी को चूंकि मालूम ही है। ये गर्मी में हम लोगों के यहाँ ऐसा सिस्टम है, गर्मी में पानी कम हो जाता है, पता लगा है कि उसकी डिस्चार्ज कम हो गया है या पानी कम आने लगा है, तो 3 घंटे में पानी वापस कलेक्ट हो जाता है। तो फिर वापस हम लोग उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा भी उसमें हम लोगों ने कर रखा है कि 3 घंटे बाद अपने आप मोटर पंप चल जाए, फिर जब तक पानी रहेगा उसमें तब तक भर जाएगा, फिर उसके बाद बंद होके, जैसे पानी खाली हुआ बंद होके, फिर वापस अगले इसमें चालू हो जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरा उसका ऑप्टिमाइज यूज़ कर पाते हैं ट्यूबवेल का भी। और हमारे यहाँ पे जो वॉलमैन वगैरह हैं, वो महिलाएं भी इसको ऑपरेट कर लेती हैं इसको। इस तरह का हमारा जो डिवाइस है, एक जो आईओटी का मास्टर डिवाइस एक है जो संपेल में लगाते हैं हम लोग, और स्लेव डिवाइस जो है वो हम लोग जो है 2 ट्यूबवेल में हमने कनेक्ट किया है। टोटल हमारे यहाँ पे हर गांव में 3-3 डिवाइस लगे हैं, जिसमें से एक संपेल में है और 2 ट्यूबवेल पर है। जो संपेल में जो डिवाइस मास्टर डिवाइस लगा है, उसमें सिम रहती है, वो डाटा वाली सिम रहती है, और जो स्लेव डिवाइस में जो है वो डाटा सिम, वो जो सिम रहती है उसमें डाटा की नहीं, सिर्फ इनकमिंग कॉल्स या इनकमिंग एसएमएस जो है, उससे जो एसएमएस ये उसको करता है, तो वो वहाँ से अपने आप चालू कर देता है मोटर पंप ट्यूबवेल वाली। और उसके बाद जैसे ही ट्यूबवेल से संपेल भरा, तो वो वापस एसएमएस करके और वापस बंद कर देता है। इसी तरह से टंकी भी भर जाती है तो अपने आप बंद हो जाता है ये। इसमें हम लोगों ने इस तरह का सिस्टम करा है कि टंकी और है, टैंक जो हमारे जहाँ बने हैं उसमें 25%, 50%, 75%, 100% पे सेंसर्स लगे हुए हैं। उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि पानी की टंकी कितनी भरी हुई है अभी, और कब से कब तक भरी थी। इसी तरह संपेल में हमने 50%, 100% और 0% 3 जगह लगाया है। ये मैंने एक थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाया है। हमारे इंदौर में हम लोगों ने जो लगाया है, वो मैंने जैसे जो आपको भी बताया कि इतने इतने % पे सेंसर्स लगे हुए हैं हमारे। और जब टंकी, जो भी बताया आपको, टंकी फुल भर जाती है, संपेल का बंद हो जाता है, संपेल फुल भर जाता है, तो ट्यूबवेल की मोटर पंप्स बंद हो जाती हैं, और फिर 75% टंकी खाली हुई या उससे नीचे जाने लगता है, तो वापस अपने आप संपेल का मोटर पंप चालू होके वो उसको भरने लगता है। इसी तरह से संपेल खाली होने लगता है तो ट्यूबवेल की मोटर पंप अपने आप, तो वो एक राउंड द क्लॉक 24 आवर्स का सिस्टम है। इसमें किसी आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैन पावर की कहीं ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, जिस ऐप में हमें मालूम पड़ जाता है कि मोटर पंप ऑन ऑफ करना, जो डिवाइस का स्टेटस ऑन ऑफ है क्या है, शोज रियल टाइम रनिंग स्टेटस ऑफ संपेल मोटर। जो अभी इसमें ऐप में दिखता है वो रियल टाइम दिखता है सारी चीज़। और उसमें हम लोगों ने बार ग्राफ बनाया है, इसमें मालूम पड़ता है मोटर पंप कितनी देर तक चला, कितनी बजे से कितनी बजे तक चला, टाइम हम उसमें आराम से देख सकते हैं, और टोटल पूरे दिन भर में कितनी देर मोटर पंप चले हैं संपेल के, ये हमें मालूम पड़ता है। और संपेल की चूंकि हमें मालूम है डिस्चार्ज कितना है, संपेल के मोटर पंप का डिस्चार्ज कितना है, तो उससे ये पता लग जाता है कि टोटल पानी टंकी में कितना भरा है, कितने लीटर्स भरा है, ये भी मालूम कर लेते हैं। और इसमें जो ये एप्लीकेशन हम लोगों ने लगभग पूरे ज़िले में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है, तो वो लोग अपना, जैसे पंचायत लेवल पे भी दे दिया हमने। इस तरह का सिस्टम किया है कि हमारे पास, मेरे पास है, पूरे ज़िले का है, हमारे सब इंजीनियर्स हैं, हमारे एसडीओ हैं, 2 एसडीओ हैं, तो दोनों एसडीओ के पास उनका जो एरिया है वो लोग अपने अपने गाँव का सारा स्टेटस देख पाते हैं। इसी तरह से हमारे सब इंजीनियर्स हैं, उनके अपने अपने गाँव का स्टेटस देख पाते हैं। इसी तरह से
जो ISA की टीम है हमारी इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट एजेंसी, वो लोग भी अपना अपना उनको दे रखा है हम लोगों ने, और TPI को दे रखा है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वालों को दे रखा है। इसी तरह से हम लोगों ने पंचायत को भी दे दिया है कि पंचायत के किसी के एक पंचायत में 2 गांव है, तो उन दोनों गांव का वो लोग अपना अपना देख सकते हैं, सिर्फ वो अपना ही देख पाएंगे कि कब मोटर चला था और कब बंद हुआ। So please conclude in about 2 minutes, 2 to 3 minutes. ये बस अब खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारा इस तरह का जो इंटरफेस है इसका मेन मेनू का इंटरफेस इस तरह का है, जिसमें ये दिखता है कि ब्लॉक वाइज देख सकते हैं हम लोग, ISA वाइज देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वाइज व्यू रिपोर्ट, कंप्लेंट किसी को करना है, कहीं कोई नहीं चल पा रहा है, किसी डिवाइस में खराबी है, तो वो कोई भी कंप्लेंट पंचायत से भी कर सकता है, तो वो यहाँ दिखता है, तो उसको मॉनिटर करके हम लोग ये इस तरह का इंटरफेस एक्चुअली है। जैसे लिखा है ऑल 213 मतलब 213 विलेज जोड़ दिया, अब हमने 331 विलेज जोड़ दिए हैं, तो 331 ओवरहेड टैंक के कितने विलेजेस हैं वो दिखता है, समपेल में इतने, डायरेक्ट इतने। अब ये गांव के नाम है, उसमें ये यदि ग्रीन कलर के वो है मतलब मीन्स वहाँ पे डिवाइस चालू है, कभी लाइट से डिवाइस बंद हो जाता है तो मालूम पड़ता है। इसके सिवाय कभी डिवाइसेस खराब हो जाए तो भी मालूम पड़ जाता है कि डिवाइस खराब है। या अब हम लोगों ने पंचायत वालों को भी ऐसा भी इसमें IVRS सिस्टम से पंचायत के जो वॉलमैन है और सरपंच हो इनको भी दे रखा है कि वो लोग अपने यहाँ पे से अपने आप खुद भी ऑपरेट कर सकते हैं, अपने घर से ही ऑपरेट कर पाते हैं, और उनको मालूम भी पड़ता है, उनके मैसेज आते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं, और वो चाहे तो IVRS से कॉल भी आता है उनका कि आपकी टंकी भर गई है, आप अपना मोटर बंद हो गया है। इसमें जो मैंने बताया है ये इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जब मोटर रनिंग टाइम है, कितना देर मोटर चला है, कितना स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और इसमें हम लोग 90 दिन का रिकॉर्ड हमारे पास अभी इसमें रहता है। 90 डेज के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड खत्म होते जाता है। इसमें हम लोगों ने सभी गांव का एक इन्फॉर्मेशन भी डाला है, और इसमें ऐसा भी सिस्टम किया है कि मोबाइल नंबर किसी का टच करेंगे तो सीधा मोबाइल लग जाता है उसको, और इस तरह का रहता है, तो उसमें कहीं भी हमें ये मालूम करने की जरूरत नहीं कि कितने लीटर की टंकी बनी, कितनी कास्ट थी, कितनी कैपिटल कास्ट, वाटर टैक्स कितना कलेक्शन हो रहा है, नल कनेक्शन कितने चल रहे हैं, सब इंजीनियर के नंबर, AE के नंबर, सारे लोगों के नंबर है, पंचायत वालों के पास भी चूंकि रहता है, तो वो अपने आप डायरेक्ट किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ये हमने अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था वैसा इसमें सिस्टम है, और ये हम लोगों ने कितने मोटर पंप अभी फिलहाल चल रहे हैं, कितने बंद हैं, वो भी मालूम पड़ता है, और इस समय जो मोटर पंप चल रहा होगा उसकी क्या स्टेटस है वो भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। ऑटोमेशन के बेनिफिट्स सबको आइडिया है, इसलिए दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेक्रेटरी मैडम है, विनी महाजन मैडम, जब इंदौर आई थी तो उनको मैंने ये अपना पूरा इसका प्रेजेंट वहाँ पे फील्ड में प्रैक्टिकल करके दिखाया था, तो मैडम उस समय बड़ी इंप्रेस हुई थी, और उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा है, सब जगह लागू करना चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि ये सिर्फ 20,000 रुपये का एक गांव में काम होता है इसमें, चूँकि इसमें क्वालिटी का या ऐसे कोई पैरामीटर्स यूज़ नहीं हुए, लेकिन बेसिक सारी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हमें ज़रूरत है गांव में, कि बेसिक मॉनिटरिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, और उसी से हमें मालूम पड़ेगा योजना को, सबसे पहला काम है योजनाएं चलाना, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि योजना में क्या हो रहा है, पानी कितना चल रहा है, और वो सब बाद में देखेंगे, क्योंकि इतना कम अमाउंट में इतनी कम कास्ट में बन रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much. यदि Thank you आप so वो much. दिखा सके लाइव तो मैं दिखाने को तैयार हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। So we'll now be having the representative from Haryana. Gujarat. Gujarat. You're just said to talk. You're on it. So please restrict your presentation to about 10 minutes. Yes, sir. My name is Jay Trivedi. I'm representing Water Supply Department, Gujarat. First, I would like to thank Singh sir, Mitra sir, Basur sir, and all delegates for taking participation. I'm also the I'm happy to share about Gujarat progress in IoT sensor-based monitoring. I'm continuing in Hindi now. सर अभी तक गुजरात में 100% वाटर कवरेज हो चुका है टैप कनेक्टिविटी। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट 525 फ्लो मीटर्स का पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्मार्ट वाटर मीटर्स
उसमें अल्ट्रासोनिक टाइप के फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं और उसमें हमने 4 डिस्ट्रिक्ट कवर किए हुए हैं और उसके 525 विलेजेस। वो अभी हमारे जो गुजरात का जो सर्वर है उस पे उसका सभी रीडिंग दिखा रहा है, वो अभी जेजेएम में अभी आगे दिखेगा जेजेएम के सर्वर पे। और दूसरा अभी प्रोजेक्ट चल रहा है वो अभी ऑन गोइंग है जिसमें सेंट्रलाइज्ड फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर वाटर नेटवर्क। उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो जहाँ पे हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं, बल्क वाटर सप्लाई पाइपलाइन रहते हैं, उसका इनलेट और आउटलेट सभी मॉनिटरिंग होगा। तो हम हमारा सर्विस लेवल बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जो हमारा जेजेएम का मेन प्रिंसिपल है सर कि जैसे 55 एलपीसीडी हमें मॉनिटर करना है और उससे हम आगे कितना इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डिजिटल वॉल उसमें क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जो हमारा कंट्रोल ऑफिस है वहां पे कमांड सेंटर एक बने और सभी डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी दिखे और विलेज वाइज भी दिखे। तो वो अभी ऑन गोइंग है सर। तो अभी मैं प्रोजेक्ट वाइज एक डिस्कस करूंगा और उसके फोटोग्राफ्स आगे ब्रीफ करूंगा। जैसे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट में सर हमने 525 विलेजेस के एजेंसी के लिए वो फ्लो मीटर एस्टेब्लिशमेंट करना है और उसमें एक चैम्बर सिस्टम और उसका 5 इयर्स का O&M ऐसा रखा हुआ है। ये उसका डिटेल्स है चारों डिस्ट्रिक्ट का, राजकोट, बोटाद, गांधीनगर और पोरबंदर का। उसमें अल्ट्रासोनिक टाइप के फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं सर। उसका 5 इयर्स का लाइफ टाइम बैटरी है, उसमें एक्यूरेसी है और ये सभी सब डिस्प्ले होता है और लाइन साइज दिया हुआ है और कम्युनिकेशन सिस्टम सर। टेकिंग टू टाइम कंस्ट्रेंट आई एम गोइंग फॉरवर्ड। ये हमारे साइड फोटोग्राफ्स है सर, ये केबलिंग सिस्टम से। और ये हमारा जो सर्वर है जो हम वेबसाइट के थ्रू भी लिंक कर सकते हैं और वहां पे हमारा लाइव डेटा भी रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि टोटल सप्लाई इन लास्ट 30 डेज 24 आवर्स और एवरेज सप्लाई के साथ भी। जैसे ये व्यू में आप देख सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ विलेजेस अप टू 25% टारगेटेड, 25 to 50%। तो हम पूरा ये मॉनिटर कर सकते हैं जहां पे भी ये 525 मीटर्स लगे हुए हैं। और ये हमारा एवरेज सप्लाई और टोटल डिमांड। तो ये हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर व्हाट आर रिक्वायर्ड वी कैन मॉनिटर। So this historical data is also available there? हाँ, also available sir, anytime in one click. These are the views. Second one is sir our distribution network. I'm briefly discuss in 2 to 3 minutes and then we conclude. This is ongoing project and almost 2200 फ्लो मीटर उसमें लगने वाले, उसमें अभी तक 800 फ्लो मीटर लग चुके हैं और उसमें से 500 या 600 का डेटा अभी सर हमारे स्काडा रूम में आ रहा है। तो उसमें हमारे फ्लो मीटर्स लगने वाले हैं, वाटर क्वालिटी एनालाइजर लगने वाले हैं, फिर जो एग्जिस्टिंग फ्लो मीटर जो पुराने लगे हुए उसकी जो वो हमारे सेंट्रल रूम में है उसके लिए आरटीयू लगने वाले हैं, फिर सेंट्रल लेवल का और सर्विसेज और कम्युनिकेशन बैकबोन का ये थोड़ा ब्रीफिंग दिया हुआ है सर। ये हमारा थोड़ा जो बीच में है वो हमारा टोटल गुजरात का वाटर सप्लाई ग्रिड नेटवर्क है और एजेंसी हम इसमें क्या क्वांटम का काम करने वाले, ऑपरेशन मेंटेनेंस का क्या रखा हुआ है उसका ब्रीफिंग है सर। ये अभी तक का प्रोग्रेस है सर जनरल। तो हमारे एक सेंट्रल रूम में वो स्काडा सिस्टम लग चुका है, उसके भी आगे फोटोज है। हाँ, दीस आर द व्यूज। यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो बल्क लाइन से जो हमारे इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं कि जो विलेज लेवल के जो डायरेक्ट टैपिंग होते हैं, तो वो हम वन टैप वी कैन मॉनिटर। दीस आर द व्यूज। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टॉप 5। और जो हमारा फर्स्ट से शुरू होके लास्ट एंड पॉइंट तक जो हमारा है, तो हमारे ब्रांचेस वाइज हम वी कैन मॉनिटर एनी। These are the views. These are the central SCADA room and the field level installations. These are the challenges जो अभी जो सेशन था उसमें ये सब ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे वो ग्राउंड लेवल पे जो काम करने में जो चैलेंजेस आते हैं उसमें कम्युनिटी अवेयरनेस है। तो हम उसके लिए जो हमारी कमिटी रहती है तो हम उसे कम्युनिटी को अवेयर करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रख के अप्रोच करते हैं, तो उसका आउटकम भी पॉजिटिव निकलता है। लेकिन थोड़ा शुरुआत में चैलेंज रहता है, फिर ऑपोजिशन रहता है, फिर ओनरशिप इश्यू रहता है, लेकिन शुरुआत में जो उसका लाइफ स्पान है तो हमारा O&M एजेंसी पे रहता है। फिर हम उनमें से एक या दो मेंबर अगर वो कैरी ऑन करते हैं तो वो पास हो सकता है। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू है, नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू रहता है और ऑपरेशन मेंटेनेंस का चैलेंज। थैंक यू। Yeah, thank you for the nice presentation. Thank you. So the last representative is from the state of Bihar.
आप present करते रहें. हाँ, yeah. I'm just giving a background that all these four presentations we have just four or three, three presentations we have seen. I would like to share Bihar is entirely different because we have concentrated mostly on the ward level schemes. So schemes are smaller, but number of schemes are more. So scale of IoT and monitoring the system is different altogether. But still keeping those things in view and the number of schemes the Department of PHED in Bihar is handling is almost around 44,000 numbers altogether, out of which 1,400 almost is PWS scheme, which is a bigger one, and rest almost around 4,000, 42,000 approximately is a ward level scheme, which they will show. So scale is very high in the sense for the IoT and monitoring. So from Professor Saab or from many other researchers, we would like how to handle such kind of situations, which is specifically, we have already proceeded in this. Okay, you start presentation. Thank you, sir. Myself, Praduman Sharma, is continuing a PhD. I am looking IoT in the state of Bihar, sir. सर जैसा कि सर ने कहा कि 40,000 तो हमारे हो गए और हमारे यहाँ सर दो लेवल पे दो डिपार्टमेंट के थ्रू हर वार्ड में काम हुआ था, जिसमें एक पीएचडी था, एक पंचायती राज डिपार्टमेंट. तो आईओटी डिवाइस दोनों में लगे हैं सर. तो दोनों को अगर कहें तो दोनों में हमारा 1,14,000 करीब वार्ड आते हैं, जिसमें से 88,000 पे आईओटी लग चुके हैं. पीएचडी का भी सर नियर अबाउट 37,000 लग चुके हैं आईओटी, और ये सभी फंक्शनल थे सर. और आईओटी से बेसिकली हम लोगों ने इसको लगाया था सोर्स के पास, क्योंकि हमारा वार्ड लेवल का बहुत छोटा स्कीम था, तो सोर्स के पास लगाया था, जिससे कि हमारा और उससे हम कितना इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, आवर ऑफ पंपिंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, ये मॉनिटर करते थे. और इस पे सारे स्कीम्स पे मतलब टोटल हर जगह पे पंप ऑपरेटर, नियरेस्ट व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह था, कि इनफैक्ट अगर आईओटी सपोज किसी दिन अगर स्कीम फंक्शनल नहीं रह पाते हैं, तो हमें तो ये पता है कि ये स्कीम आज फंक्शनल नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर वी कैन कॉल हिम एंड नो व्हाट्स द रीजन ऑफ नॉन फंक्शनिंग टुडे. सर ये हमारा प्रेजेंटेशन है सर. इसमें साथ साथ हर आईओटी के साथ हम लोगों ने जो भी वार्ड में काम किया था, उसका पाइपलाइन का जीआईएस मैपिंग भी करने का है उसी एग्रीमेंट के तहत. 5 साल का इसका मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पैसा भी अलग रखा हुआ है, पर ईयर 5% के हिसाब से 25% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है और 75% आफ्टर ऑल कंप्लीशन है सर. इसमें सर हमारे यहाँ 4 तरह की स्कीम्स थी सर. पाइप वाटर सप्लाई स्कीम, जो कि एक गांव को निश्चित नहीं था, दूसरे गांव को भी कनेक्ट करता था अगर वो पास का था तो. सिंगल विलेज स्कीम, जो एक पर्टिकुलर गांव की हुई. मल्टी विलेज स्कीम, जो बड़ी स्कीम हुई, जो गंगा नदी से लेकर के 30, 35, 40 गांव को मिला करके एक साथ जो बनी. और एक वार्ड लेवल स्कीम. मैक्सिमम स्कीम सर ये वार्ड लेवल स्कीम है सर. ये हर घर नल की योजना जब चालू हुई थी, तो ये वार्ड लेवल स्कीम से शुरू हुआ, क्योंकि वो वार्ड उसको एक यूनिट माना गया, और वार्ड क्रियान्वयन समिति जो पंचायत की थी वो उसकी हुई. हमारे साइड में जो पीएचडी ने जो काम किया, वो भी वार्ड लेवल पे काम किया, लेकिन उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीएचडी के एजेंसी को है. ये मल्टी विलेज स्कीम का है सर. फोटोग्राफ्स आईओटी लगे हैं सर. और हमारा वार्ड लेवल स्कीम में सर यही है, एक स्टेजिंग है 8 मीटर स्टेजिंग का, और उसके ऊपर 10,000 लीटर की टंकी है. ये बहुत छोटी सी स्कीम है. नियरली अबाउट 100 to 150 हाउस होल्ड्स के अराउंड आते हैं इसमें. तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी या साइट कैपेसिटी ऑफ वाटर कंजम्पशन, ये आईओटी के थ्रू में मेजर करते हैं सर. मोटर रनिंग टाइम कितना, कितने से कितने बजे तक है. वहीं पे सर आईओटी डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है स्टार्टर और मेन स्विच से. बेनिफिट ऑफ आईओटी तो सर हम लोग सुबह से ही देख रहे हैं. सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा सर. प्रत्येक डिवीजन में हर स्टूडेंट के पास एक
इसका मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें उसके जिला का सारा का सारा डाटा उसके वो आता है। इनफैक्ट उनके पास ये भी जनरेट होकर के आता है कि पिछले 24 घंटे में कौन सी स्कीम नहीं चली, उसकी एक लिस्ट आती है। उस स्कीम नहीं चली तो उस स्कीम में का पंप ऑपरेटर कौन है, ताकि वो उसका आप टेलीफोनिकली या अदर सोर्स से आप पता करें कि कारण क्या है और उसको ये रेक्टिफाई करें। तो सर हमारे पास जो सूचना आने में जो देर होती थी, वो सूचना IoT के डिवाइस से तुरंत आती है और ब्रेकडाउन टाइम कम है सर। ये सर वही है GIS मैपिंग पाइपलाइन का उस गांव का सर। सोर्स का भी जियो टैगिंग है। ये पर डे स्कीम डैशबोर्ड है सर, कि पर डे हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी है किसी गांव का, कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ऑल स्कीम सर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है कि उस डिस्ट्रिक्ट में उस दिन कितना स्कीम था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बेसिकली सर इससे हमको सबसे बेनिफिट ये मिल रहा है कि कब बंद हो रहा है, और बंद हो रहा है तो सही का बंद है या गलत का बंद है वो भी पता चलता है। और ये सर स्टेट वाइज भी एक डैशबोर्ड है जो हम लोग स्टेट लेवल पे मॉनिटर करते हैं। ये डिटेल्स है सर जो उसमें हम लोगों ने डाल के रखा है। जैसे इसी में है सर अनुरक्षक मोबाइल नंबर जो पंप ऑपरेटर को अनुरक्षक कहते हैं सर। और एक और उसका कांटेक्ट नंबर है कि दूसरा नंबर अगर वो अवेलेबल ना हो तो हर जगह का 2 नंबर है सर। ये डिटेल्स है सर। हमें सर इसमें बेसिकली जो चैलेंजेस सर जो आए, वो चैलेंजेस सर चूंकि हम सबसे पहले 19-20 मतलब हमारा काम सर 17-18 से शुरू हो गया था हर घर नल का जल, और हम इसको स्टार्ट करने शुरू किए 20-21 में IoT मॉनिटरिंग सर स्टार्ट किए। तो 20-21 में स्टार्ट किए, 17-18 से शुरू किए। तो इनिशियल स्टेज में उस पीरियड में हमारा काम भी हो रहा था और ये भी लग रहा था, तो थोड़ा हमारा IoT मॉनिटरिंग सिस्टम लगने में थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि कहीं पे गए तो पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं था, ये उसमें एक हुआ। और दूसरा है कि सर हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले अनेक रास्तों को चुना, इसलिए हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा और कुछ गलतियां हमसे हुई हैं जो जिसके कारण जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। वो गलतियां थी जी, बेसिकली हमारा सर यही बताना था। वो गलती हमसे बिड डॉक्यूमेंट में हुई थी। बिड डॉक्यूमेंट में हमने कुछ ऐसे क्लॉजेस लगा दिए थे जो होने में बहुत कठिनाई है, और उसको सॉर्ट आउट करने में और ज़्यादा समस्या है सर। वो सर ऑनलाइन यहाँ पे पैनल डिस्कशन के बीच में वो ऑनलाइन यहाँ पे अरेंज करके रखेंगे तो वो दिखा देंगे, क्या ठीक रहेगा ना। तो सर बीट डॉक्यूमेंट में ही हमारे साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ। शेयर करना चाहें और शेयर करने योग्य हो, शेयर कर लें। शेयर करना चाहें चूंकि ये लाइव है तो लाइव कर दें तो हम शेयर कर दें। अभी उसको छोड़ दीजिए, जी जी लाइव नहीं वैसे भी सर बिल शेयर करेंगे तो बहुत लंबा होगा, है ना। अनुभव अपना बताइए कि कहाँ मिस्टेक हुआ। सर हमसे ये मिस्टेक हुआ कि हमने GIS मैपिंग कर दिया साथ में। GIS मैपिंग बहुत छोटी सी चीज है सर। GIS मैपिंग हम केवल बिड का जो मेन जो हमने पब्लिश किया पेपर में, वो GIS मैपिंग ऑफ सोर्स था। और जब डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी में जो वर्क डन में आए तो उसमें है GIS मैपिंग ऑफ सोर्स एंड पाइपलाइन। जी, तो सर वो सर जो बोल रहे थे वो हमें यही है, और उसके कारण सर हमें इतना प्रॉब्लम है। अब सर देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने किलोमीटर में पाइप बिछाया 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर पाइप बिछी है। अब GIS मैपिंग में वो आ रहा है 1 किलोमीटर 180 मीटर, 20 मीटर का डिफरेंस आ गया सर, या कहीं 30 मीटर का ज्यादा आ गया, कोई एग्जैक्ट तो आता नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में एरर होता है, लेकिन वो कितना एरर को माफ किया जाए ये नहीं है। ये कहीं पे नहीं है कि किस एरर को आप ओमिट कर सकते हैं और किस एरर को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब प्रॉब्लम है साइट से भी हो रहा है। Yeah. Okay, thank you for your presentation. So the floor is now open for discussion and questions and answers. I would like to ask. Yeah. Yeah, thank you, sir. You have done in one village.
So, what is the remedial action? Suppose there is a sensor which says that value is beyond limit. So somebody monitors, because that is one of the major challenge that we are seeing. So who is given the responsibility of monitoring, and what happens if he does not do that, his work? जो 55 एलपीसीटी जो है सर, एक वही एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए होता है सर। तो 55 एलपीसीटी उस सब बीच में कुछ समय के लिए वो 30 एलपीसीटी हो गया था। जब हम लोग वहाँ बात किए, उनको मालूम पड़ा कि हाँ थोड़ा सा सप्लाई में इशू आ रहा था कुछ, उस कारण से ये प्रॉब्लम आया है सर। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। जब हमने उनको बात करना शुरू किया तो दे सेड कि सर अभी 3 दिन से ऐसा चल रहा है, आने वाले 1 दिन और रहेगा, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। तो बहुत प्रॉपरली उन्होंने टाइमली रिस्पॉन्ड किया सर। और उसके बाद जो भी उनके इश्यूज आ रहे थे, उन्होंने सप्लाई में कुछ पंप का इशू था, उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई किया कर चालू किया, देन वापस वी गॉट 55 एलपीसीडी। तो रेमेडियल अभी सर जस्ट फोन पे और या फिर जो भी हमको अटेंशन मिलता है, वहाँ के जो प्रभारी सब इंजीनियर हैं उनको डायरेक्ट दिया गया सर जिम्मेदारी, वो वहाँ पे हैंडल करते हैं। अगर उनको कोई इशू आता है देन इट इज टेकन अप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ पे फिर ई को बोला जाता है। तो अभी तक उस लेवल पे गया नहीं सर, वहाँ लोकल लेवल पे जो सब इंजीनियर हैं और जो पंचायत सचिव, उनसे बात करके इशू सॉल्व हो जाता है। ओके। If we have one mic here, then that would be enough. So next question is for you, I suppose. हाँ, सो सुनील उड़िया जी, आपसे था सवाल जी। आपका सिस्टम तो बड़ा अच्छा है और सस्ता भी है। उसमें जो सिम आप लगा के रखे हैं, उसकी मंथली कॉस्ट ऑन एन एवरेज कितनी आ रही है? और अभी जो सिस्टम्स लगे हैं आपके, उसमें फेल्योर रेट कितना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सर हम लोगों ने क्या किया है कि जो पहली बार में इसका रिचार्ज करा है, तो पूरे साल भर का रिचार्ज करा दिया हमने। तो लगभग 5,000 रुपये पूरे तीनों सिस्टम का रिचार्ज करने की जो कास्ट आई है। क्योंकि एक जो पहला जो मास्टर वाला जो डिवाइस है, उसमें डाटा वाला सिम होना ज़रूरी है। तो उसमें डाटा सहित कराया तो लगभग 3,500 रुपये का जो साल भर का होता है वो, प्लस 2 डिवाइस ऐसे जिसमें सिर्फ इनकमिंग फ्री हो और या SMS 100 SMS पर डे आते, वो वाले कराए। टोटल 5,000 रुपये पर ईयर का है, उसमें एक्सपेंसेस है। तो हमारे कुछ डिवाइसेस को तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया चलते हुए। तो अब हम लोगों ने धीरे धीरे उनको पंचायत को इसमें किया है कि जलकर जो आप इकट्ठा करते हैं वाटर टैक्स, उसी में से इसका पैसा जमा करें। तो चूंकि उनकी भी आदत में आ गया है ये इस तरह से चला रहा, तो वो लोग अब जमा करने लगे हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेटेड क्वेश्चन था, जब हम टंकी लगातार भरते रहते हैं जी, और वॉल्व अगर खुला रहता है तो 24/7 स्कीम हो गई जी, जो कि अच्छी बात है। जी। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्रॉस 20,000 कितने विलेज, 500 कुछ विलेज किए आप? टोटल सर हमारा 600 विलेज है पूरे 600 इंदौर जिले विलेज में। 600 में 331 विलेजेस को हम लोग कर चुके हैं अभी तक। तो उसमें कैसा अनुभव रहा? पानी का वेस्टेज बढ़ा या पानी का वेस्टेज कम हो जाता है सर। कभी भी टंकी ओवरफ्लो नहीं होती है। 100% सेंसर पे जैसे ही जाता है तो पंप अपने आप बंद हो जाते हैं, चाहे रात में चले चाहे दिन में चले। तो कभी भी कोई भी टंकी में से ओवरफ्लो नहीं होता है, ना संपेद में से ओवरफ्लो होता है। तो पानी का वेस्टेज भी बचता है सर। एट हाउस होल्ड लेवल? एट हाउस होल्ड लेवल तो सर सप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई जब करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ हम लोगों ने 24/7 स्कीम्स भी बनाई थी सर इसके अंदर, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा बचत है। क्योंकि रात को 2 बजे भी पानी लेना है तो वो डायरेक्ट ले लेते हैं, उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले मैं उज्जैन ज़िले में था, वहाँ पर मैंने सबसे पहली 24/7 स्कीम्स बनाई थी। उसके बाद तो हमने करीब करीब 100 स्कीम बना दी थी उज्जैन में। वो एक स्कीम जो पहली वाली बनाई थी वो लगातार 2 साल तक 24/7 चली। नहीं, यही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये सबके साथ शेयर करिए। जैसे 600 में से कितनी आपने 24/7 की, और उसमें ऑन एन एवरेज जो कंजम्पशन था वो बाकी स्कीम की तुलना में कम रहा या ज़्यादा रहा? ये सब लोगों के लिए काफ़ी आई ओपनर रहेगा। जी सर, ये जो स्कीम्स हमने 600 बनाई, इसमें से तो हमने 24/7 एक ही की। क्योंकि वो पंचायत लेवल पे कुछ उनके कुछ इश्यूज रहते हैं। किसी ने पीछे अपने बाथरूम में ले जाके एक नली लगा के छोड़ देते हैं, तो पता लगा पानी वेस्टेज होने लगता है। जो उनके अपोजिट ग्रुप के रहते हैं, सरपंच वगैरह के। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस था उज्जैन में, जब हमने 100 स्कीमों में 24/7 किया था, तो उसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो बाद में धीरे धीरे लोगों ने 24/7 बंद कर दिया। बाकी 24/7 का एक्सपीरियंस हमारा इतना बढ़िया रहा है कि
पानी की बचत, स्टोरेज की बचत, लाइट की बचत, सभी चीज़ की बचत थी उसके अंदर। लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण 24/7 नहीं हो पा रही। यदि 24/7 करें तो बहुत ही इसमें सभी तरह से बचत है और कभी भी पानी अवेलेबल है हमेशा। और ऊंचे लेवल, एक इसमें खास बात ये कि ऊंचे लेवल पे भी पानी आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि जब पानी अपना भर लेता है आदमी नीचे वाले लेवल पे, तो वो अपने आप ऊंचे लेवल पे भी पानी चलाता है। जो अभी कुछ लोग मोटर पंप से खींचते हैं या इस तरह की कोई अन्य तरह की वो रहती है, उसमें वो सब संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो 24/7 बेस्ट थिंग है। सबसे पहले हमने किया था, पहले मैंने ही किया था उज्जैन में। ठीक सर, थैंक यू सर। जी, क्योंकि ऑपरेशन वाल्व को यदि अपन ये करेंगे, सेंसराइज करेंगे या, तो उसमें बहुत ज़्यादा कास्ट आएगी। हमने एक बेसिक 20,000 रुपीज़ में किया है, बहुत ही कम। क्योंकि एक अपन वाल्व में वाल्व वाला वाल्व लगाएंगे तो 25,000 का तो वाल्व की एक वाल्व की कीमत होती है। सिर्फ एक गांव के लिए 20,000 रुपये है, ये मिनिमम है, और इससे कम करना पॉसिबल नहीं है। नो, मैंने कहा था कि पूरा 100% ऑटोमेशन नहीं है, ये पंप ऑपरेशन तक ऑटोमेशन है, सिर्फ वाल्व ऑपरेशन पे ऑटोमेशन नहीं है। और जितना हम शक्कर डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, हम जितना पैसा लगाते जाएंगे होता जाएगा। मैडम के सामने भी यही बात हुई थी जो सेक्रेटरी आई थी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। So you had more questions, Pradeep ji? सर ये आपने You had more इंदौर का जो questions. बताया एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके अलावा एमपी में और कहीं रेप्लिकेट किया है सर ये आपने? जैसे इंदौर का ही आपने एक स्टडी बताया है, एमपी में और कहीं? नहीं, अभी इंदौर के सिवा भी कहीं नहीं किया। हाँ सर, वी हैव एक अच्छा चीज सर जो सर से डिस्कशन के दौरान मुझे अभी बातचीत हुआ कि उनके एसओआर में आइटम इंक्लूड है सर, बिकॉज द कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी गो टू इम्प्लीमेंट द, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि सर आपने रेट वगैरह कैसे फिक्स किया और यू हैव गॉट फॉर सम एम्पनलमेंट। ही सेड कि हमने एसओआर में इंक्लूड कर दिया। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग भी उसको अपने यहाँ कर सकते हैं। थैंक यू। 5 साल पहले मैंने एक आइटम बना के ईएनसी सर को भेजा था कि सर ये हम लोग यदि इसको डाल दें तो हमारा काफ़ी सारा, क्योंकि उज्जैन में मैं था तब उन्होंने 3 किलोमीटर दूर एक कुआं था, वहाँ से पानी लाना था और वहाँ रोज़ चालू करना मुश्किल पड़ता था। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया था उज्जैन में। तो 3 किलोमीटर दूर से कुछ ऑपरेट करने नहीं जाना पड़ता था और अपने आप चालू हो जाता था। तो ईएनसी सर ने बोला कि एक आइटम बना के भेज दो तो अपने को कहीं भी काम आएगा। तो हम लोगों ने भी वो इसका यूज़ इस वाले इसमें ऑटोमेशन के रूप में यूज़ किया सर। Yes, you can continue. One last question from Bihar. आपके Thank you. कुछ 1,14,000 वार्ड हैं, तो इसमें 100% आप कब तक कर देना चाहते हैं, और ये डेटा कभी पब्लिक डैशबोर्ड पे आएगा कि नहीं आएगा? Okay, thank you. Yeah, the next question, please. Anyone, you may raise your hand. Yeah, please. सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा कि आपको प्रॉब्लम आई थी डाटा को ट्रांसफ़र करने में, आप स्टेट पोर्टल पे लेके गए, उसके बाद आप एनआईसी पोर्टल पे लेके गए, तो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट पोर्टल पे लेके गए डाटा, उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ की? डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे ले जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इज नथिंग बट द साइट जहाँ पे हमारा सेंसर लगा है। हाँ।
ना, वहां से डाटा हमको लाना है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल एक्चुअली वो होता है एक पूरा पब्लिक आईपी से एनआईसी अलाउ नहीं करता है राइट। सीधा उस पे लेने के लिए। तो हमारे को एक रिस्ट्रिक्ट था कि हम डायरेक्ट उसको डाटा को अगर लाते हैं तो उस पर कंप्रोमाइज होगा। तो एक वर्चुअल मशीन वहां तैयार की गई, उस वर्चुअल मशीन पे सारा रिस्क हम लोग लेते हैं, वहां पे पूरा डाटा आता है। वो आने के बाद अब डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, वहां से वो एवरी मिनट डाटा लेगा, बट हमें एवरी मिनट का जरूरत नहीं है। वही बात हो ना, इतना सारा डाटा जनरेट करके करेंगे क्या, जितना हमारे को जरूरत है उतना ही भेजेंगे। तो हम दिन में 2 बार डाटा लेते हैं, एक बार सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे। वो डाटा वहां जाता है, उसको हम लोग वहीं पे तैयार करते हैं। देन उसको तैयार करने के बाद एपीआई के थ्रू फिर हम अपना मेन सर्वर पे लेके उसमें जाते हैं। सर जो साइट पे आपने कहा कि डाटा आता है, उसके लिए वो जिस तो ऑलरेडी पूरा बना हुआ है सिस्टम वहां पे सब हाँ, जिस मैकेनिज्म। कंपनी ने बनाया वही डाटा ट्रांसफर कर रही है। ना ना ना, यही मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि जिस कंपनी ने बनाया अगर उसी को आप डाटा ट्रांसफर का जिम्मेदारी देंगे तो ओनरशिप हमारे अपने पास होना चाहिए, डाटा हमारे पोजीशन में आना हाँ, चाहिए। वो तो वो कॉन्फ़िगरेशन हाँ, पूरा वो जो हमने किया है। कंपनी है वो आपके पोर्टल पे डाटा भेज रही है, स्टेट पोर्टल पे। ना 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 ना, मैं फिर वही मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जो हमने पूरा सिम वगैरह लगा के सिस्टम और नेटवर्क पूरा तैयार किया है। हाँ, वो डिवाइस से डाटा सीधा हमारे स्टेट सर्वर पे आता है। हाँ, डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। यस, तो हमारे जो उसमें कंपनी का कोई रोल हाँ, नहीं है। तो जो पोर्टल आपने बनाया वो आपने खुद इन बिल्ड बनाया है या बाहर किसी कंसल्टेंसी ना ना, से वो बनाया? हमारा इनबिल्ट बनाए हुए, यही तो मेन पॉइंट है। मैंने शुरू में ही कहा था ये चीज कि हम वेंडर का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। वो हमने खुद एनआईसी से कोऑर्डिनेट किया और एनआईसी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया इसमें। कम से कम हमको 4 to 6 मंथ्स लगा था, सिर्फ इसी बात पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे कि हम पब्लिक आईपी से डायरेक्ट नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट डाटा हमारे आता है। हाँ, एक चीज जरूर है, अभी हमने फॉर द टाइमिंग, चूंकि अभी इसमें चल रहा है टेस्टिंग पीरियड पे था वो, उस दौरान हमने वेंडर को दे रखा था, क्योंकि मॉनिटरिंग जो हम बोल रहे हैं बीच में कुछ हुआ, उस समय हमारा मैकेनिज्म तैयार नहीं था कि हम वो पूरा मैकेनिज्म से हम खुद मॉनिटर कर सकें। तो समवन शुड बी देयर जो कि वॉच करे कि नहीं डाटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी आई है, वहां पे हमारे को ठीक करने की जरूरत है सेंसर। जैसे बीच में हमारा एक सेंसर में प्रॉब्लम आ गया था, तो वो सेंसर डाटा देना बंद कर दिया, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली। मेरे को फिर वहीं से वेंडर के पास ही फोन आया, सर ये डाटा सेंसर प्रॉब्लम हो गया, डाटा नहीं आ रहा है। तब हमने अपने मेन पोर्टल पे देखा, यस डाटा इज नॉट देयर। फिर उन्होंने दूसरा जाके सेंसर चेंज किया, उसके बाद रेगुलरली फिर वहां से डाटा आने लगा। तो जो आपका जो स्टेट पोर्टल है, आपका स्टेट में कोई स्टेट डेटा सेंटर है या आप क्लाउड की सर्विस यूज कर रहे हो उस डेटा क्लाउड को की रखने सर्विस यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे आगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जैसा भी बात हुआ, सर ने भी आज पॉइंट आउट किया इस चीज को कि आप एक स्टेट लेवल पे एक आईओटी सेल बनाइए, एंड दैट इज अ मच नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई आई वाज थैंकिंग टू सर वेरी मच कि अभी एट दिस करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सर ने इनिशिएटिव लिया और सबसे पहले आईओटी का वर्कशॉप यहाँ कराया, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सर कि अभी हमें इन सब चीज़ों की जरूरत है। क्योंकि स्टेट लेवल पे क्या होता है, जब तक हमारे को पुश नहीं किया जाता ना, तब तक हम लोग कोई चीज़ में इनिशिएटिव नहीं लेते। लाइक आईओटी सेल बनाना है, सर का एक वर्ड था, हमको पुश किया कि नहीं आईओटी सेल हम जाके वहाँ पे तैयार करेंगे। तो वो सब चीज़ें हमको लार्ज स्केल पर जब आएंगे ना मास पे, तब हमें वो सब चीज़ें सोचना और उसको तैयार करना पड़ेगा। अभी एक आईओटी पायलट बेसिस पे था, एक मॉडल था जो हम लोगों ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया, और फोकस वही था कि हम डायरेक्ट डाटा अपने पास खुद रखेंगे और हमारे यहाँ से डाटा वहाँ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you. मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है सर। जी सर, आपने जो अपना सिस्टम ऑटोमेट किया हुआ है उसमें आपने कहा कि आपने 0 से 50 से और 100 के ऊपर सेंसर्स लगा रखे हैं। जी तो क्या आपने कभी ऐसा एनालिसिस किया है कि कौन सी टंकी है जो जल्दी कम हो जाती है, मतलब 100 से 50 पे आ जाती है? जी आपने बोला था 330 आई थिंक आपने स्किप किया है। 331 जी हाँ, तो उसमें से कौन सी है, कभी एनालिसिस किया है कि कौन सी स्कीम में डाटा फ्रिक्वेंटली डाउन जाता है, पानी डाउन जाता है? हम लोग क्या करते हैं कि अब मैं बताना चाहता हूँ कि रोज़ रात को हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं डेली, संडे को छोड़ के 8 बजे से 11 बजे तक। उसके अंदर मैं, हमारे एई, हमारे सब इंजीनियर्स, हमारा आईएसी की टीम, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहे हैं वो, और टीपीआई की टीम, ये सारे लोग उसमें डेली रहते हैं। हम 50 गांव को रोज लेते हैं, 50 गांव के एनालिसिस करते हैं, 50 गांव का डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे पानी बंद हुआ है या क्यों बंद हुआ है या ब्रेकडाउन क्यों हुआ है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। कहाँ पे कोई सी लाइन फूटने के कारण हो रही, कौन आदमी ऑटोमेशन नहीं चला रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, वो डेली हम लोग पिछले 1.5 साल से 3 जुलाई से हम लोग लगातार वीसी के माध्यम से ये मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे कि योजनाएं चल सके। तो ये जो डाटा आप एनालाइज कर रहे हो, ये मैनुअल कर रहे हो या ये भी ऑटोमेट हो रहा है? डाटा ऑटोमेट हो रहा है पूरा उस पे सर्वर पे। उसका एनालिसिस तो मैनुअल कर रहे हैं हम लोग, मैनुअल कर रहे हो? मैनुअल कर रहे हैं तो सारे लोग। चूंकि ये 500 लोगों के पास ऐप हमने दे रखा है, ऐप 500 लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, तो सारे लोग अपना 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 एरिया देखते हैं और अपने एरिया में चेक करके देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हुई है कोई?
कि मान लो मेरी एक गांव में है जो टैंकी है वो फ्रिक्वेंटली डाउन जाता है उसका पानी जी दिन में 3-4 बार, तो 331 से कितने आपके ऐसे गांव निकल के आए? मैंने जैसे बताया कि 331 में से 196 ओवरहेड टैंक वाले हैं, क्योंकि 1000 से कम जनसंख्या वाले जो गांव थे उनको हमने डायरेक्ट सम्पवेल से पंपिंग करके किया है, और 500 से कम वालों को डायरेक्ट कनेक्ट करके किया है, डायरेक्ट पंपिंग से ही किया है। तो हमारे टोटल टंकी वाले गांव जो है 196 है ओवरहेड टैंक वाले। तो उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, जहाँ पे वाटर सप्लाई करेंगे वहाँ पे फास्ट खत्म हो जाता है। जैसे जनरली वाटर सप्लाई होता है 1 या 2 घंटे में टंकी खत्म हो जाती है, एक घंटे से लेकर 2 घंटे से, क्योंकि पहले पार्ट में किया अपन ने जोनिंग सिस्टम भी किया, तो एक पार्ट में सप्लाई किया, फिर दूसरे पार्ट में सप्लाई कर दिया। ओके, तो थैंक यू। खत्म, इसमें मालूम पड़ता है, इस ऐप में भी मालूम पड़ता है कितनी बजे से कितनी बजे तक वाटर सप्लाई हुआ है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। So it's about the time series analysis anyway. Yeah, please. There are a lot of schemes in Bihar and magnitude is so high. So इसमें क्या है कि आप how to integrate, अभी तो सभी basic stage में है. So when you will go to intermediate stage, what is the roadmap you have planned? You have things about नहीं it? नहीं, यहाँ हम लोग आने का सेंस भी वही है, यहाँ से भी कुछ इनपुट निकालें। वैसे हम अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि एनआईसी को एक नोडल बनाया गया है, Yes, sir. और 2 एजेंसी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो वर्क किए हैं ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे, उनको कैसे इंटीग्रेट करके एटलीस्ट बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल डैशबोर्ड पे सारी चीजें चले आए, वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक इसमें भी मिस्टेक हुई, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने मशीन को, जैसे आईओटी मशीन को ही उसका आईडी दे दिया, कोड कर दिया, और उस कोड को यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी आईटी मशीन्स कुछ खराब होना शुरू हो गई, तो जैसे ही खराब होना शुरू हो गई बस कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। देन आई हैव सजेस्टेड एंड मेनी पीपल आल्सो एंड वर्किंग ऑन इट दैट हम उस पर्टिकुलर स्कीम को एक कोडिफिकेशन कर दें, सो दैट द मशीन इज सेंट्रिक खत्म हो जाए, स्कीम सेंट्रिक रहे, मशीन बदलता रहे लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन आता रहता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इंटीग्रेशन फेज में है, कब तक हो जाएगा इसको तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट हम पूरी प्रयास में लगे हुए हैं कि इसको कराएं जल्द से जल्द। Thank you, sir. Another question, it may be a submission भी हो सकता है। ये सभी पैनलिस्ट और यहाँ के उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को अभी हमको एक मौका है कि हाउ टू मेक पीपल फ्रेंडली IoT सिस्टम, वो बड़ी चैलेंज हो सकता है आगे जाकर, तो उसमें भी आप सोच सकते हैं पीपल फ्रेंडली इन सेंस अभी 3 साल 2 साल या 5 साल जो भी एजेंसी इसको O&M करेंगे, आफ्टर दैट so the charity begins at the home. So now is the time to make the people friendly. Friendly. Yeah, next question. Hello, sir. I'm Saket Kumar from Water Bank. My question is that most of the sensors that all the states have presented, they are using is like, in terms of quality, is either TDS or pH only. I mean, what about other sensors for heavy metals and iron or other things? What is the plan, and any state has taken any initiative? I would like to know. So that's an open question if anyone has already done. Pradeep ji. This is an important thing that has to be communicated. देखिए, IoT systems are to ensure the service delivery. ठीक है, बैठिए please. So what is the assumption? There is a source. If there is any contamination, सबसे पहले source में हम क्या करते हैं? How the process is? पहले उसका हम पानी का टेस्ट करते हैं, इज देयर एनी कंटामिनेंट है कि नहीं, और उसको कहाँ पे ले आके टेस्ट करते हैं? NABL लैब से करते हैं, सो दैट वी हैव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और वी नो द प्रायोरिटी कंटामिनेंट्स क्या है। जैसे वेस्ट बंगाल में होगा तो मैं आर्सेनिक फ्लोराइड जरूर करूंगा, पंजाब में हूँ तो मैं यूरेनियम भी कर लूंगा, है ना। सो प्रायोरिटी कंटामिनेंट्स करके, और यस नो अगर वो सेफ सोर्स है देन वी सप्लाई, इफ सोर्स इज नॉट safe, either we put a treatment plant or we find another source. So as such, in a pipe water supply system, we would not expect any chemical contamination present there. ठीक है ना? This is a shift from earlier system, जहाँ पे हैंड पंप था, ट्यूबवेल था, कुआं भी था, सोर्स वाज वेरीड, तो वहाँ पे हमें सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते थे। नाउ वी आर इन अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है ना। क्लोज्ड लूप सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है ना, कि आपको पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी का नाउ देयर इज समवन हु इज इन चार्ज ऑफ दैट सिक्योरिटी, और उस टैप से अगर कोई बीमार पड़ा तो फिर देयर इज समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब हमारे यहाँ भी आ ही जाएगा, कंट्रीज में जो वाटर सप्लाई
देखते हैं उनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियर इसलिए कहा जाता है कि दे कैन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल, है ना। तो उससे नौकरी चली जाती है, लोग इलेक्शन हार जाते हैं, बहुत कुछ होता है। सो द शॉर्ट पॉइंट इज कि we would not expect in a closed water supply system a chemical contamination. That should be that should be taken through regular testing of water samples of source in the lab. ठीक है। Now second part, what is variable? तो वेरिएबल क्या है? देयर सोर्स इज, इफ माय सोर्स इज गुड, ट्रीटमेंट प्लांट इज गुड, उसके बाद हमारा वाटर हमारे सोर्स से अच्छा निकल गया, बट रास्ते में वॉल्व आ गया, वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन आ गया, सो द क्वालिटी ऑफ वाटर में चेंज, बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन आ गया। तो नॉर्मली इसके लिए हम पीएच एक अच्छा होता है कि पीएच पानी का अगर बदला तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो पीएच, और सस्ता है सबसे बड़ी बात, इसलिए हम पीएच टेस्ट करते हैं। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन। क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि क्लोरीन 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 हम डालें, डोजिंग करें और उसकी राइट क्वांटिटी को मेंटेन करें? बिकॉज क्लोरीन ऑफर्स अ रिस्क प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन थ्रू आउट द सप्लाई चेन। सोर्स से निकला और जब तक मैंने ग्लास में पानी पिया, अगर उसमें थोड़ी सी क्लोरीन है, मतलब मैं सेफ हूँ, मुझे बरसात के दिनों में मुझे डायरिया नहीं होगा, ठीक है ना। जो कि प्रॉब्लम है, मतलब अच्छे शहरों में भी बरसात के दिनों में हर फैमिली में लोग बीमार होते हैं, मतलब ये फिक्स है इंडिया में कि भाई ये बीमारी का सीजन आ गया और पूरा परिवार एक साथ बीमार हो रहा है। किसी ने ये नहीं देखा भाई पानी भी देख लो, हो सकता है पानी में ही दिक्कत हो, सबने आरओ लगा रखा है, ठीक है ना, फिर भी दिक्कत है। तो ये सो इसलिए वेरी लिमिटेड पैरामीटर्स। सेकंड, वी हैव टू कंसीडर द कॉस्ट फैक्टर आल्सो। तो व्हाट पैरामीटर्स वी हैव टू ऐड in terms of quality monitoring in IoT system has to be chosen based on the site specific thing, but we should never suggest, because your partners and KRCs are also there, so I thought it should be communicated down the line कि हमें बहुत पैरामीटर्स अब टेस्ट नहीं करने, क्योंकि हमारा सोर्स सिक्योर हो गया है, क्लोज लूप सिस्टम है, तो उसको क्यों हम फालतू के पैरामीटर्स टेस्ट करें? ठीक है, थैंक यू। Thank you, Pradeep ji. So you also... In addition to what Pradeep ji has told, जिस तरीके से कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं, बिहार में कई तरह के कंटेमिनेशंस पाए गए हैं, जिसमें से आर्सेनिक है, आयरन है, तो उसको क्वालिटी एंड नॉन क्वालिटी करके हम लोगों ने पूरे बांट दिए हैं स्कीम्स को, और उसके लिए स्पेसिफिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं सारे जगह पे जहाँ पे रिक्वायर्ड है। और साथ में हमारे यहाँ हर डिवीजन में, पीएचई डिवीजन में एक लैब बनाया गया है, एक सेकेंडरी और रादर यू कैन से रेफरल लैब भी बनाया गया है स्टेट लेवल पे, और उसकी कुछ ना कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी बंधी हुई है। जैसे आर्सेनिक का हर महीने में टेस्ट होना है, उसका सोर्स का प्लस डिलीवरी पॉइंट पे। इस तरीके से आयरन का 3 महीने में होनी है। तो इस तरीके से भी जो आपके पॉइंट्स हैं हम लोग कवर कर रहे हैं। मतलब वी आर ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। So it's line with what Pradeep ji said actually, that if it's region specific, then of course you need to look at some specific things. Yeah. Next question. Yeah, please. You have the mic there, right? Yeah, please. Take it from Pradeep ji. सर मेरा छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन है, आपका सर पर स्कीम कॉस्ट कितना आया था अप्रोक्सीमेटली? पर स्कीम कॉस्ट आपका जहाँ पे अभी जो आपने... हम लोगों ने सेंसर लगाया है सर, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली क्लोरीन सेंसर ही है सर, वो आई थिंक 2 लाख 2.5 लाख के लगभग है। तो इट इज अराउंड कॉस्टिंग 8 पायलट एक ही गांव में लगाया भी, 8 से 10 लाख हम लोगों को पड़ा है सर। ओके। अच्छा, दूसरा सर, जो आप डेटा इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, उसमें जो चैलेंज हमें बिहार में आया था, उसका एक थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ सिंगल वेंडर था जो डेटा सप्लाई कर रहा था या मल्टीपल वेंडर? सिंगल वेंडर। अच्छा, वी कैन नॉट। हाँ, उसको उसमें एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे बिहार में 4 वेंडर्स थे, तो जब उसको हमने स्टेट डैशबोर्ड पे लाने की कोशिश करी, तो चारों के प्रोटोकॉल्स अलग हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो आप अगर एनआईसी के थ्रू करेंगे तो इट विल रिमेन द कॉमन। हमने एनआईसी के थ्रू किया, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज द डेटा फर्स्ट गोज थ्रू। आपने बाद में किया एनआईसी के थ्रू, जब आप टेंडर कर चुके थे और 4 वेंडर को आपने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिए थे डाटा कलेक्शन के। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। जो आपको जब बिड आप कर रहे हैं ना, दैट शुड बी द केस स्टडी फॉर अदर स्टेट्स। इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि हमने जो पायलट किया है उसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखा है कि आपका जो डाटा सेट होना चाहिए दैट शुड बी वेल स्पेसिफाइड। अदरवाइज 4 अलग अलग वेंडर 4 अलग टाइप का डाटा दे रहे हैं, उसको ला के आपको पूरा सेग्रीगेट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। राइट।
before collecting any data. अच्छा, मेरा सर ये डायरेक्टर सर से एक थोड़ा सा क्वेश्चन है सर। इसमें जो IoT बेस्ड सिस्टम्स हैं उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कम्स फ्रॉम द डेटा ट्रांसफर कॉस्ट विच इज द कॉस्ट ऑफ द सिम कार्ड and data transfer. Now, given that this whole system is being implemented throughout the country, is there any way that the cost of the SIM card can be reduced by intervention of the ministry? But this is one of the major costs, sir. नहीं देखिए, वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसका कुछ कॉस्ट होगा, कुछ हमारे पास प्राइवेट प्लेयर्स अवेलेबल है, वही मार्केट में उपलब्ध है। हम क्यों सरकार के पास कहते हैं कि हमारे लिए साइड लाइन से एक थोड़ा सब्सिडी दे दो? वो छोड़ दीजिए। अगर वो मार्केट में सस्टेनेबल नहीं, मतलब आपका सोल्यूशन अच्छा नहीं है। अब इंदौर का एग्जाम्पल देखिए, वो उसी यूजर चार्ज के पैसे से अपना मेंटेन कर पा रहे हैं। मतलब आपको अप्रोप्रिएट स्कीम बनानी ही पड़ेगी और शॉर्टकट्स मत देखिए। लॉन्ग टर्म अगर आपको चलाना है सिस्टम, 100 साल चलाना है, तो शॉर्टकट्स नहीं देख सकते आप। ये क्वेश्चन था कि जैसा भी अपन बात कर रहे थे इंदौर का ऑटोमेशन सिस्टम का, इसमें सर आई थिंक एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड कि हमारे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कितने हैं, उनका 55 एलपीसीडी से वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, हमारा ओवरहेड टैंक का कैपेसिटी कितना है, हमारा सप्लाई टाइमिंग कितना होगा। देन आई थिंक इतना सारा मॉनिटरिंग कि हम 25%, 50%, 75% और 100% लेवल पे है तो हम ऑटोमेटिक पंप ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, वो वहाँ के लिए ठीक है। लाइक अपना हाउस होल्ड का है, अगर मेरा इंटरनल हाउस में कि मैंने टंकी लगा के रखा है, बट जब सब कुछ वेल डिफाइंड है, सब टाइम स्पेसिफाइड है, पंप ऑपरेटर है, देन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, दिस सिस्टम इज व्हाई नीडेड। इसमें सर चूंकि सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है, या हमको मालूम पड़ जाए कितना भरा हुआ है या खाली है, इसके लिए है। बाकी कोई इसका एडिशनल कास्ट तो लग नहीं रही है। नहीं, बट इट इज द कास्ट ऑफ डिवाइस, मास्टर डिवाइस एंड स्लेव डिवाइस। ओएनएम भी लगेगा, उसका पूरा एक नेटवर्क बन रहा है। तो भाई मैं थोड़ा सा जब से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, जब सब कुछ फिक्स है, आपको नंबर ऑफ हाउस होल्ड फिक्स है, 55 एलपीसीडी फिक्स है, टैंक कैपेसिटी आपने फिक्स कर दिया है, यू आर सप्लाइंग पर्टिकुलर टाइम, तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड है? सभी के चार सेंसर क्यों लगाया, उसके बजाय एक ही क्यों लिया? एक ही बचा। हाँ, नहीं मतलब इतना सारा मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं हम लेवल का मॉनिटरिंग करने। हाँ, सर उसमें लेवल की मॉनिटरिंग के साथ साथ क्या है कि जैसे 100% भर जाएगा तो वहाँ सेंसर नहीं होगा तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। यदि 75% पे सेंसर लगाएगा, हमने 75%। मतलब कहने का आशय ये कि जब आपको मालूम शाम को 5 से 6 में वाटर सप्लाई करने वाला हूँ पूरे विलेज में, हाँ। वो फिक्स है सर। जनरली सुबह, हाँ। then it is required. बट 7 नहीं है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड फिक्स है, पानी कितना देना वो फिक्स है, आपके टैंक में कितना पानी। हाँ, वेरी 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 स्मॉल, और चूंकि भर जाएगा तो किसी आदमी को ऑपरेट। सिस्टम इज वेरी गुड। इफ आई वांट टू डिफाइन माय स्टेट, देन व्हाई शुड आई लगा सकते हैं? तो आप लगा दीजिए। नहीं सर, वो हम लोग क्या जैसे 75% पे, जैसे कि 75% खाली हुआ फिर भरना चालू हुआ, क्योंकि पानी की कभी पानी का डिस्चार्ज कम है, कहीं ट्यूबवेल में कहीं कोई समस्या है, तो कम से कम वो हमेशा भरी रहे, इसलिए 75% पे भी लगाया है। Any other questions? So I don't think there is any other question, but it was a wonderful, very lively and informative, interactive session. Yeah, go ahead. Hello, sir. My name is Pranav Sutradhar. I am an assistant engineer from Assam. So my question to both Indore and Gujarat is that what is Indore the and Gujarat? Okay. oh sorry, Gujarat, no, Madhya Chhattisgarh. What is the confidence level of data obtained from the sensors? How much accurate does the data you get from the sensors? Data are very accurate.
बिकॉज I हम लोग mean, प्रैक्टिकल भी do देखते we हैं, need to? प्रैक्टिकल भी देखते हैं, थ्योरेटिकल भी देखते हैं Hmm. और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और रोज जैसे बताया आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू रोज बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। कभी हम फोन से ऑपरेटर में सिस्टम हमने ऐसा भी किया है कि मोबाइल नंबर को टच करेंगे तो सीधा ऑपरेटर को फोन लग जाएगा या जिसको भी लगाना चाहे लग जाएगा। उनसे हम पूछते हैं कितना टंकी भरी, आधी टंकी भरी, वो बताता है बिल्कुल आधी भरी हुई। दैट मीन्स डाटा इज करेक्ट। Sir, does it require often calibration of the sensors? No, no, not required. Okay. So one more question is that was there any instances that the sensors needed to be replaced? Yes. And what conditions does it? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा जैसा आपने बताया। कभी कभी सेंसर में कोई करंट आ गया या कुछ इस तरह का हो गया तो वो सेंसर खराब हो सकते हैं या बेकार हो जाते हैं वो, तो इसलिए सेंसर उस समय चेंज करना पड़ते हैं। अभी तक हमने जो 331 लगाए हैं वो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। पहला जो लगाया था 1.5 साल पहले लगाया था, तो लगभग अभी तक 20 जगह के हम लोग सेंसर बदल चुके हैं। तो तब तक सर कोई डेटा आ नहीं रहा था जब तक आप रिप्लेस? वो मालूम पड़ जाता है, जैसे हमने बताया ना ऐप में मालूम पड़ता है कि यहाँ का बंद है, तो क्यों बंद है तो हम लोग पता करते हैं क्यों बंद है। वहाँ जाके पता लगता है कि सेंसर खराब हो गए हैं। फिर सेंसर चेंज करने के लिए हमने, चूंकि यदि किसी को भेजा जाए तो बहुत महंगा पड़ता है, तो हमारी जो ISA की टीम है उनसे बोल रखा, उनको भी हमने ट्रेनिंग दिलवा के उनको भी बता दिया कैसे वो लगाया जाता है और कैसे खोला जाता है। तो वो लोग वहाँ से ISA की टीम वहाँ से खोल के हमारे पास भेज देती है, हमारे ऑफिस में। हम लोग एंटर के पास भेज के या तो उसको चेंज करा देते हैं या ठीक करा देते हैं। थैंक यू। Thank you. हाँ, सुनील उड़िया जी, देखिए उड़िया साहब ने जो लास्ट वाला बात कहा ना, सेंसर वाली बात तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वीसी करते हैं वो पंप ऑपरेटर के साथ, पानी समिति के साथ, ISA के साथ, TPIA के साथ, आपके JE के साथ, सब लोग एक पेज पे होना। ये सेंसर तो लगता रहेगा बाद में जब लगेगा आपके स्टेट में, लेकिन ये काम आपका तुरंत होना चाहिए। कितने लोग हमारे यहाँ हैं जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है अपने एरिया का? आपके सारे JEs के पास व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है तो सबसे पहले वहाँ आने चाहिए, ठीक है ना? मतलब एक्चुअल सेंसर तो बाद में हो सकता है लगे, लेकिन ये जो ऑलरेडी मीडियम्स अवेलेबल है इसका यूज़ होना चाहिए। और व्हाट्सएप एक चीज़ है, अगर आप जूम कॉल करते हैं और ये सारी चीज़ें कहते हैं तो समझ में ज़्यादा आता है लोगों को कि अच्छा ये मतलब होता है, ये फालतू के 4 सेंसर क्यों लगा रखे हैं तो इसका ये मतलब है, लाल बटन का ये मतलब होता है। और ये प्रॉब्लम अगर उससे सॉल्व होती है उसकी, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बनता है कि यार मैं अगर अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे भी 10 लोग हैं टीम में खड़े हुए जिससे हो सकता है। प्लस एज ए जेई बेचारा अकेला आदमी है, 25 गांव 50 गांव उसको आपने दे दिया है। अब वो परेशान है कि भाई हर दिन सुबह सरपंच फोन कर रहा है तो छुप करके वो बैठ जाएगा। उसको अगर आप एम्पावर कर दें इस तरह से जिस तरह से इन्होंने किया, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो सेंसर लगाना, IoT लगाना सेकेंड थिंग है। सबसे पहले ये माइंडसेट होना कि लोगों की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, वो फर्स्ट स्टेप है जो आपको कहेगा कि आप सेंसर लगा लो, ठीक है ना? थैंक यू। 1.5 साल से लगातार PC ले रहे थे, पिछले जुलाई 2021 से। So it's all in the mind, Pradeep ji. Absolutely. I totally, completely agree with you that you need to change your mindset first. Yeah. Anyone else? So this calibration, of course, is an important thing for any sensor. Mhm. Yeah. Yeah, plus CSIR is already working on these aspects. So
So all the calibrations of the sensors, they're coming up with the comprehensive documentation, standards to be maintained and all that, algorithms for the same. So I think tomorrow some of the brief you will be able to hear about it. Thank you. Yeah. For the lively session. Thanks a lot to all the panel members. Thanks a lot to the professor, and thanks a lot to all the participants for this interactive discussion. So we'll now start with a presentation by the Haryana Space Application Center team. So basically, center is trying to develop a centralized IoT platform so that all the data from all the sensors, when we have like 6 lakh villages, you can understand the amount of data that needs to be stored. So for that, we are developing a centralized IoT platform at a central level. So all the data from the sensors from the village level can be directly ingested into the centralized IoT platform. And on top of that, they will be also developing some AI/ML based dashboard. There will be services for alert management systems and many other services. So for that, I will invite the HASAC team to kindly, present and conduct this session. Hello. Yeah, hello. Yeah. Good afternoon, Sultan sir. A Yeah, warm good welcome afternoon. to the workshop. Yeah, it is a great pleasure to interact to all common content stakeholders. Thanks to Pradeep ji and so with your team. So it is eagerly needed to we can interact in with our one common platform. So this is basically Haryana Space Application Center is autonomous organization. So we are working with the NWIC under umbrella of Jal Shakti Ministry. So multiple applications we are working out of that. One is a Jal Jeevan Mission is also. So this is a unified interoperable centralized platform. So rightly explained in very beginning, ultimately we need a common platform with the common data format, common data models, common calibration of the sensor. Rightly point out the sensor calibration is a very, very important. Then life of that particular sensors and dependency of that sensors. So many activities happen across the India in a scattered way, but that is the first phase. It is a rightly we are working. That is also required. Many state is an advanced stage, but is in the second stage. Now government is in that thought if we work on the interoperable, operable, unified formats. So basically, RSEC working in the many other activities and cloud-enabled digital platform in cloud collaboration with the NWIC, which is an integrated a most detailed geo-enabled platform. These include the integrated reservoir management, pollution control management, crop planning, water budgeting, water informatics, state water informatics centers, drought management, smart grid, water transfer, water security plan, groundwater informations, pond characterizations, and parallelly the Jal Jeevan Mission. Many other applications is also the river basins, uh, interlinking river components analysis, reassessment of the water availability across the India in using the space technology, and NOCAP, EPAMS, AIB, and accelerated irrigations benefit program, many other activities. We are working on that. So in as basically JGM and NWIC is usualized a very unique concept. In that way, probably everybody is agreed on there is a 4 parameters required. First, for that one cloud is required with the centralized way. Then on top of the cloud,
different type of application, required application development is there. Then data sourcing. Data sourcing from the all stakeholder across the India, more than probably 6 lakh our villages is there. Then urban coverage is there. So how to get that data sets in common platform. Then after that, once data is received, then we require the analytics and dashboards and impact assessment that particular area of the interest. This is a broadly concept of this entire program. So my tech team, we have the in-house teams, so that now I request to my solution architecture who are actively involved in this, Mr. Manas, he is continuing this technical part in continue. So Manas, kindly over to Manas. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Okay. Am I audible? Hello? Hello? Yeah, Manas, you are audible. Yes, Yes, sir, you are. Yes, So, you are audible. all right. Yeah. So this is a basic system landscape that we have designed, where how we are showing how we are going to connect multiple applications and platforms in a unified manner. And there were a few questions during this presentation asked with respect to trend setting, with respect to the post trend setting information on, for example, how many tanks have had removal of water very quickly. So all that would come under the business intelligence part. So how that would work is basically this data would be stored and archived, and as every relevant stakeholder has unique requirement of reporting, they could generate their own customized report. So rather than having any standard set of reports, it would be more easy to generate customized report as per the requirement based on the data that is available. Now, this landscape system, what it would do is it would cater to a vendor management system. Now, this vendor management system is where we are going to register multiple vendors and the devices that the idea here is to use DaaS, that is data as a service. So each vendor would install their own device rather than the state level or the department level procuring or buying the device. So it would be hassle. Most of the challenges that were discussed in this presentation with respect to operation and maintenance, management of the device would be handled by the vendor. And we would, as for us, the key is only data. We would be using data as a service medium, where we would be paying vendor based on the quality and the quantity of the data that we have received. So the major role of this application would be in terms of how the finance would also be movement, the billing of the vendors, the payment of the vendors, device management, reporting, and this application would be able to connect to at national level and state level systems. The SOPs deliverables. Now there are 5 segments in the SOPs. That is the design, the data exchange, the integration, the deployment, and SLA. Now in design, what do we expect? What would be delivered out of this phase of design? We would get a detailed project plan, all the consulting reports, and high-level design of JJM IoT. In data exchange, multiple activities would be achieved with respect to SRS, LLD, UAT plan. So UAT is user acceptance test plans, data migration tools, data migration plan. And when it comes to integration and testing, we would be creating an integration report. Now this phase is very important, as how we would be defining how the multiple vendors, particular state. There was one question asked where a single state had multiple vendors and there was a challenge, and the NIC team had helped in resolving that challenges. So we are also on the same line, where we need to define the specifications, we need to define the standards, and then these vendors can connect those devices and let the data flow in the master templates that we are expecting. Then comes the deployment and go live, where
We would have a stabilization report with respect to how the systems are working and go live report. Under SLA, what we are looking at is monthly O&M reports. Here, we would be utilizing our platform, the IMS module platform, incident management system platform, to understand the number of incidents raised, the number of incidents occurred, and we would be tracking those incidents and any help desk. So there would be a help desk system where it could be a state level stakeholder could report the issue, the citizen could report the issue, or the service provider, that is our vendor, could report the issue. Based on this issues reporting and everything, what would we do is we would learn and update the systems accordingly, and any new information that is required would be updated in knowledge base and FAQs. Now, to achieve these deliverables, these are the activities that are carried out in each phases. Under design phases, how the project kickoffs happen, business data architecture, framework, policy frameworks, finalization of platform and toolkit components. When it comes to data exchange, how we are, the kind of migration tools that we are using, because most of the states have already implemented amazing solutions. And if we have to integrate these solutions, how the data migration would happen, we need to, the SOPs to be created for that, and how smoothly that data can be transferred at the central level. And after this data exchanges happen, the integration with their existing system and new systems that could be directly utilizing this platform services, or if they're continuing with the state level, how that those services can be integrated with this platform to bring a national level perspective of this mission. I would not go into the testing. Is basically how unit testing and error rectification, bugs rectification based on different departments and different modules. Now, to implement all this, the approach is planning, design, development. So now for planning, what are the steps that we have taken? We have first, the mobilization of team is very important. And then the interaction, collaboration with the NWIC and JJM with HASEC team, where we have done multiple workshops, and then we did a project kickoff where a pilot was done. Based on that, we have created certain reporting templates, detailed project plan. Then we have design finalization and the relevant competent authorities, sign off from the relevant competent authorities. After that, we are preparing about 2B processes. So basically how these processes would be connected with existing or new vendor systems, creating of FRS, finalization of those FRS, and then onboarding different schemes. Now, during the design, development, and integration phase, as this platform is a drill down system from national level till the block level, there are multiple stakeholders attached to this. So creating the right access level roles, credentials, and creating credentials for the third party service providers, how to set up the triggers and notification. This triggers and notification could be based on either incident management or application bugs or any other workflow that is required for relevant stakeholders to move. And then being a national level application, we are making sure that this would be available in multiple regional languages. So language Unicode compliant is being done, and we are creating a global language files where it would be easy to translate the whole application into other regional languages. There will be a content management system. Now, as each state, and as we just experienced in this presentation, every state had a different, though the result, though the vision was same, result was same, but the approach was different. So here, as we understand, each department has a unique workflow, unique process. So the way the system is being designed is that you will be able to configure your workflows, and then the system would be able to handle it. And then basically the input that is required and the output that is required would be processed based on these workflows. Payment and reconciliation, here again, I would stress on the DAS part. The DAS part would actually reduce current initial investments that the lot of discussion has happened on the cost of the sensors during this workshop. Here, we really don't need to procure any sensors. We will just be using the vendor services. So challenges like
where a replacement of sensor is required, that is an additional cost because we have to buy it. Now here it would be it would completely be on the service provider's reference that they need to replace the sensor, they need to manage those sensors, they need to maintain those sensors. Then we have certain form and query builder. This can be utilized with respect to your field team. As I mentioned, we would not just provide standard reports, but there would be option to generate your customized report with report generators. We would create test use cases. We would create batches of data migration and integration to make sure that those batches can be expanded at state level for each state. And then how the deployment on the cloud would happen and stabilization when we go live. Now, the OMN highly discussed in today's workshop. Here, what we are focusing more is with respect to the application part of the OMN and incident management system. The sensor part, the physical part is more which would be taken care by the service provider itself. And service provider would even provide training to the relevant block level, village level operators so that they also understand the usage of system and they make sure that the service provider is following the SLA of maintaining the devices right. And in case now in a DAS system, there are chances that as the asset is owned by service provider, there would be a chance where the service provider would like to exit from this program. So there were policies defined and methodologies defined on how the exit and transition can happen. So if a service provider is exiting and new service provider is coming in, how the previous data and the new data from the new service provider can still smoothly be integrated and managed, and still the reports can be generated. The handover part. And now what we will do is we are starting off with a centralized unified support desk system. So one would be an email methodology, one would be by a phone. So it would be a pan India dial single number where support desk tickets could be raised, and these tickets could be viewed directly in your logins under your headless system ticket system itself. And then based on the queries, the feedbacks that we get, the application will be made, there would be a continuous improvement towards the application. And any new updates, any new information would be updated in the knowledge base and FAQs. Now, KPI, there was a lot of discussion in today's workshop again on KPI. So I believe that we are more like, this session is more of a review session where we are just, summarizing the whole thing. But the thing that I would like to focus is the KPI would be a drill down system where it would be from the central government till the operators level. And the parameters that would be focused in the KPI. Currently, these are the parameters, but as and when we progress, we learn new things, we collaborate, the KPIs can change, can be enhanced. That is feasible, and this option is available in the system. So right now, these KPIs are designed with respect to how many schemes are running, number of functional and non-functional schemes, the amount of data that we can capture with respect to that, the functional days of each scheme, the relevant information that is required for that particular stakeholder. Now, incident management system. Now, for a system like this to run, incident management system is very important. It's a backbone because here the user will be able to facilitate. We will be able to facilitate the user to track, monitor the progress of these devices. Now, this incident management system is basically a 4-step system, which involves reporting, alarm, response, and disposal. Now, these 4 steps are basically how this workflow of the application would be is once the incident is identified. Now, this identification can happen either from a citizen, stakeholder, or from the service provider end. It is logged into the system. It is categorized. Now, here the categorization, the machine level would be applied here, AI would be applied here in terms of learning based on, as we would be gathering a lot of data from multiple states. So here we would be using an ML methodology to understand and categorize multiple incidents, to categorize them into common factors,
And then based on that, the priority of the incident would happen. Initial response would be sent to the concerned party that has raised the incident. After the diagnosis has happened. Now, in case the diagnosis requires level 2, level 3 support, it is escalated to level 2 or level 3. Once it is resolved, the closure of the incident happens, and the whole incident workflow or the status, different stages of the incident can be actually viewed by the concerned stakeholder who has raised the incident. Now, vendor management system. So this is the service provider system. This is a very important system if we are opting for the DaaS methodology, data as a service, where what we would do is multiple vendors, whether they're working for one state or multiple states, or multiple vendors working within a state, all of them can register on this portal. And then against them, their devices that are attached in different locations will be registered. Configurations information will be provided at the portal level, where the vendor could update the informations over there and then set up the device. Device testing would happen. Each vendor would have their SPOC, that information would be entered into the system, and there would be vendor performance reports. Now, these performance reports are very important because based on these reports, the pricing, the cost, the billing that is raised by the vendor, the invoice that is raised by the vendor, the payment would happen based on if the reports are satisfactory, not satisfactory. So based on that, different penalty rules or configurations can be enabled here. And here we will be easily be able to monitor both qualitative and quantitative data. So when I say qualitative is basically how accurate the sensors information is. Quantitative is if we have set up a process that once in 3 hours we need the data to be coming to our system, whether that much, so six times a day. So whether 6 times a day the data was coming or no, we would be able to measure in both qualitative and quantitative manner. The 4 major components of vendor management system is registration portal, GIS-based asset management. So all these assets would be mapped and would be tracked. Vendor reports, again, here there would be multiple reports, one on performance, one's on billing, and vendor help desk system. Now here we are providing a help desk system to vendor with respect to if there is sometimes the issues can be not related to device, but related to probably disruption of work due to unforeseen circumstances. So all those issues can be raised here. Vendor can, if the vendor believes that the billing and the payment made is not right, any kind of help desk that the vendor requires can be raised through this vendor help desk system. Now in this data as a service, so when we use data as a service, the most important factor is data, as they would be paying for data. So we did a assessment based on the assumption that there are 6 lakh villages and the data frequency is 3 hours frequency, so 6 times a day, and the volumetric size of data coming from each sensor is 500 bytes. So based on that, we understand that on a daily basis across, if this is completely implemented on a basic solution, the data flow in MB would be around 3,600 MB per day. Intermediate solution, it would be 57,600, and in advanced solution, it would be 1,80,000. Any further more details required on this, we will be more than happy to share further details on this. In coming slides, I would share the details on how you can contact us. Now, this is one of our dashboards. Here, we are able to analyze, we are able to see the number of schemes, the functional schemes, the TDS reading, average pH. So now based on the sensors, multiple values can be shown here with the map views. This is at a local level, how the system is showing the view. This is our internal dashboard where we can actually see the status of all those sensors. So this is not a public view. This is an internal view where you can see which are active and which are not active. Now, I first spoke about cloud infrastructure. The amount of data that is pouring in to process the data, the intelligence to run the reports, it's a huge investment. So it's always good to opt for a cloud as a service.
and the 8 components, major components, that are storage requirements, CPU, RAM, OS, graphic display, network type and speed, web server, and digital wall. Now there is a detailed information about each on what a client side and server side is required. It is there in the PDF. I will be more than happy to share this later on with everyone over there. Now, the main support that for this system, the vision of JJM to actually fall in place, there are 3 major components that we need support from the stakeholders at every state level. Data source. Data source is basically when we are opting for this DAS system, it's going to be a complete centralized program at national level, and we would require a complete support from the state level to make sure the standards, the methodologies, and the formats that we have maintained has the data is flowing and the vendors are complying to that. So second covers with respect to the first part, the standardization of all this, and connectivity and implementation. Now this is very important with relevant departments. We over here, JJM, NWIC, and HARSEC has to be, we need to connect with each a SPOC on each relevant department to get the required, to gather required informations. And we need support from those department in execution of implementation of the STAS system. And we would even like to recommend that SWIC to be made a nodal agency. Any questions? And as I had mentioned, suggestions are highly welcomed, and you can contact us on contact@harsac.org. Anyone looking for this complete presentation, we will share that also with the detailed information that you're looking for. Please connect us with on contact us. To the HRSAC team, I have one question. Since if I look into the practicalities now, many states will be going ahead and doing the RFP and the tendering process, right? And as you have said, a very important thing is the data flow, right, from the devices to the central cloud. And the states can of course choose to have a state cloud in between as well. That's not a problem. Any like from your perspective, you should like guide the states like what sort of data transmission protocols, APIs should be there in the tender document, so that we don't face a situation in future that states are receiving data, but due to some sort of a API gap, the data can't come to the central server. So if you can just suggest and talk on that, like from the state sides, when they're going to the tendering mechanism, what sort of clause should be there on specifically the data transfer protocols? Thank you. I was speaking to. Hi, I'm Argo Paul. I'm from the Tata Community Initiative Trust. I work with the department. Yeah. Thanks, Mr. Paul. This is a very valid question, and I guess for to answer this, I'm not sure whether this session is the right, would give me that much time. But what we could do is we are more than happy to actually connect with all the state level stakeholders, and our team here will specifically interact individually, and then we can actually guide and assist in terms of the complete cloud infrastructure, the data models that need to be happen, the formats that are expected, so that when this platform goes live, there is a smoother and a faster data migration to this platform. Mr. Paul? Yeah, sure. So I think your contact is there, so you can expect questions from states offline later. We'll be more than happy to connect with everyone, and it would be because this would help us build a better and a stronger application. Yes, that's basically, since both the work will go on parallel. That's why I wanted to ask this, and this should not be a hindrance on a later stage. Any other questions? Any questions from the audience? Any questions from the audience? Can you answer one thing? Some states have already gone ahead and they already have some vendors available and they are getting certain amount of data in their systems.
So how they can make use of this centralized platform? Can they use this platform, or will it not be useful for them? That is question number one. Then can there be a standard format which can take data from their servers and at least provide some basic analytics, basic reports to them, whether that is a possibility or not? Can you spend some light on that? I got your second question right, but there was some disturbance. I didn't get your first question. I'm so sorry. Yeah. So my question was ki some states have already gone ahead and they already have a data Okay. that may not be in the standardized format, that they may have some formats. So can they make use of such a system, first of all? And if so, how? All right. So to answer your first question, see when we say standards, right? It's we who are defining the standards, right? Based on the learning and experience, the NWIC, JJM, and HACCP team is one that is defining the standards. So it would obviously, if the standards are varied from what the data is available with state, it would be a challenging task, but it's not an impossible task. So what would happen is the efficiency of the report would reduce. So the relevant information that you're looking for may reduce, but it's not that we would not be able to integrate or we would not be able to migrate the whole the data. And to your second question, the formats, yes, we can actually enable states with their current data. Also, we can enable them to develop reports and generate reports. We are more than happy to actually connect on that front, and we can provide them the methodologies and APIs on how the data can be shared, and then how we can process and generate reports for them. Yeah, okay. So I think you will expect some certain states to contact you, especially state of Bihar, I think, and Gujarat, We would and really want some states in some districts in Madhya Pradesh also. So we have around, let's say, 10,000 villages, which will have some kind of systems. So we can start with that. So we would actually request, we would welcome everyone to connect, because this is how we can make sure this vision is actually reaching a completion stage. Any other questions? Okay, thanks. Thanks a lot. Thanks a lot, Sultan Singh sir and the entire team. I think we'll close this session here and we'll break out for lunch. But before that, there's an important announcement. After lunch, there will be a team exercise where all the participants will be divided into 3 groups. So I'll request post lunch, we'll reassemble at the 3rd floor. And okay, so we'll first assemble here. And the group, all the participants will be divided into 3 groups. We'll put up the list in the WhatsApp group and also in the 3rd floor and also here. And so the purpose of this team exercise is each of the group will be given a layout of a village scheme. It will be a very simple layout. And based on the layout, we have to develop a BOQ. And for that, we'll also give many hints in the case study. So I'll request everyone to go through details through the text. So objective is for every layout, the participants have to decide which type of solutions will be more optimal, like whether it should be basic, whether it should be intermediate, or whether it should be advanced. So there will be enough hints in the case study to do that. And so it will be a 1-hour team exercise. Post the exercise, we are expecting from each of the group that you will come up with a detailed BOQ. The format will be given to you. And tomorrow we'll again have a session where 2 members from each of the group will be expected to present their solution to the entire audience. And also they can at that time raise any queries. So we'll be like breaking out now for the lunch, and the lunch will be served at the ground floor of the hostel block. And we'll be like again regrouping at 3 p.m. here in the auditorium. Thanks a lot. Yeah, just one more thing before we start. The BOQ that you will prepare will be the same BOQ which we will use for our GEM training, and we will upload basically that BOQ. We'll build a RFP based on that BOQ. So today's output is also very important that you will give. Of course, you will give a presentation day after. And we are assembling here at 3, no? At 3. So let's be here 5 minutes to 3. Thank you.
And sir, we are stopping the live streaming here.